नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस ओयूटी चैनल को समस्त को वेलकम। तो आज पुणी थे तुम मानकर ही डिमांड रे तुम मानक ही कहवा अनुसार आउ गोटे सेशन आसी जाइए जोटार कि तुम ओयूटी एग्जाम रे ए चैप्टर्स रु आमर निहाती भाव क्वेश्चंस देखा मिल फर्स्ट तो है बायोटेक्नोलॉजी जोटार कि आमर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर भी इंक्लूडेड included also आमर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जोड़े कि सिकल सेल एनीमिया आमर जति भी सब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स सब गुड़ाक विषय में डिस्कशन करबा है सब विषय डिस्कशन करबा। तो जल्दी जल्दी जॉइन हो जाते समस्त देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन। समस्त फुल्ली चार्ज अच्छा फुल्ली चार्ज बस ठीक अच्छे वेरी गुड। राधे राधे प्रियव्रत जय जगन्नाथ प्रणाम प्रणाम अंशु लता गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ है। तो तुम मान सेशन अनुसार तुम मान कहवा अनुसार आज क्लास पुणी थे है तो समस्ते पुणी तुमर हाँ समस्ते पुणी से एक्टिव पार्टिसिपेशन देखेब। टोटाल 100टा क्वेश्चन अच्छी आज है टोटाल 100टा क्वेश्चन अच्छी यही प्रकार जोश टिल द एंड रहा दरकार है देन वी विल बी डेफिनेटली आमर ये क्वेश्चन आम निहाती देखा पाइबा है। तो वेराइटी क्वेश्चन अच्छी सब अच्छी स्टार्ट करवा ताले स्टार्ट करदे ओके ठीक अच्छे। गुड आफ्टरनून अंशुमन उपांशु चलो फर्स्ट क्वेश्चन कल which statement correctly explains voice break होची समस्त को पई बोले ना समस्त में एबे ठीक हैला एबे ओके ग्लिच होची अच्छा ठीक अच्छे तुम यहाँ को आंसर कर मुझे चेंज करके आसूची है मुझे चेंज करके आंसर दिस
हेलो एबे क्लियर है वॉइस एबे आसिला एबे ठीक अछि हम्म एबे क्लियर है वॉइस एबे आसिला हो एबे आसिला हो ठीक अछि ये बंद ही गला हो तो चलो स्टार्ट स्टार्ट करबा हे गला तमने आंसर देखुतली मु सी कहूछ सी हबो हो तो चलो स्टार्ट करबा टिके टिके शुभारंभ टिके एमती न हेले किछ भलो लागिवो हला हो तो वन हबो सी तृप्तिमय ठीक अछि देखिबा डीएनए फ्रैगमेंट DNA fragment separate primarily according to the fragment length under a constant electric field. Constant electric field जो हमारा कुआ जाउची को बेसिस से कुआ जाउची since DNA is negatively charged. Since DNA is negatively charged, so it will move towards the anode. हमरो कोटे electric field generate करेगी हमें DNA रा fragments उड़ा को तारा वेल्स उड़ा रे पके देले smaller the fragments of the DNA the faster it will move है ना smaller the fragments of the DNA the faster it will move. चलो next question. During isolation of the genomic DNA from the bacterial cells, EDTA is mainly added because it denatures the protein directly, chelates the magnesium ions required for the DNA's activity, hydrolyzes the phosphodiester bonds, dissolves the cell membrane. DNA isolation कला टाइम रे आमे bacterial cells रो EDTA आमे add करू EDTA add करू कौन पाई add करू कौन दरकार पड़छि से जिंसटा Yes, question number 2. EDTA कौन EDTA कौन इथिलीन डायमीन टेट्रा टेट्रा एसिटिक एसिड कौन पाई दरकार एडा इट कैंडिडेट्स दी ऑप्शन नंबर बी तृप्तिमयी आयुष्मान गौरव वेरी गुड तृप्ति ठीक अछि प्रियव्रता कैलेट्स द मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड फॉर द डीएनएज एक्टिविटी मैग्नीशियम आयन को चेलेशन करेगिरी डीएनएज एक्टिविटी को इंड्यूस करोछि इन पीसीआर रो फुल फॉर्म कोन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किए देथिले कैरी म्यूलस देथिले ओ ईयर रे देथिले 1983 रे है ना the annealing temperature is set significantly higher than the primer melting temperature. The most likely consequence is increased non-specific amplification, excessive primer-dimer formation, poor primer template hybridization leading to the little or no amplification, rapid denaturation of the tag polymerase. Jai Jagannath Swagadika. Yes, look up Manjari. ठीक अछि कौन हबो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 question number 3 see very good everyone poor primer template hybridization leading to little or no amplification है ना little or no amplification very good everyone next question answer question number 4 blue white screening depends upon the disruption of the ampicillin resistant gene ORI sequence, lax Z alpha gene, tetracycline resistant gene. कौन हबो? Yes, ठीक अछि C. एटा कौन हबो? Question number 4. Question number 4. C. Okay, ठीक अछि ताले normal condition रे जते बेले हमर ये lax Z gene द disruption हो नथिला lax Z gene disrupt होनी ता माने कोन हेछि कहलो मते condition दा recombination हेछि ना recombination हेइ जते बेले lax Z gene no disruption तो से केस रे कोन हेछि recombination हेछि ना recombination हेइनी recombination हेछि ना recombination हेइनी जल्दी हां अपूर्व स्वाति हां not recombinant हेइनी दिव्या very good non recombinant not no recombination
तो दा द्वारा कौन कौन कॉलोनीज कौन फॉर्म हबो से बीटा गैलेक्टोसिडिस रिलीज करिगिरी एक्स गाल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट रे बाइंड करिगी ब्लू कलर कॉलोनीज देबो हैला ब्लू कलर रो कॉलोनीज देबो बट जते बडे लैग्स दैट जीन रे डिस्ट्रप्शन हुए ताले रिकॉम्बिनेशन हे जाईची रिकॉम्बिनेशन हे जाईची आउ ए जीन ना मध्ये प्रोड्यूस हबनी ए एंजाइम रे भी प्रोड्यूस हबनी जा द्वारा कि व्हाइट कलर रो कॉलोनीज फॉर्म हबो बुझी पाइलो हैला एडा वेरी इंपोर्टेंट एडा वेरी हाई चांसेस अछि एग्जाम में देखा जिवला क्वेश्चन हैला एडा हमर देखा वाला वाला अछि अच्छा आउ गोटे जीन रे मते को आउ गोटे जिंसडे मते कोह जे लैक्स दैट जीन रे बहुत गुडे क्लोनिंग साइट अछि हैला ना बहुत गुडे क्लोनिंग साइट अछि सेति पय बोली हमर ए गोटे जीन रो ही हमर डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ी जे ट्रांसफॉर्मेशन हेछि कि न हेछि बोली या फिर हमरा रिकॉम्बिनेशन हेछि कि न हेछि तो लैक्स दैट जीन रे जेहेतु हमर बहुत गुडे क्लोनिंग साइट अछि ता माने सेटा को हमर कोन कहआ जाउछि बिले कहलो को प्रकार साइट सेटा को कहआ जाउछि को प्रकार साइट सेटा को कहआ जाउछि इट इज नोन एज मल्टीपल क्लोनिंग साइट हला मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS बोली कहआ जाउछि ए टर्म दा इंपोर्टेंट जानिबा दरकार से पय जानि दे ठीक अछि डन नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 5 a recombinant plasmid inserted within the lag that alpha region is expected to produce blue colonies on the X-gal medium, white colonies on the X-gal medium, yellow color colonies due to the lactose fermentation, green fluorescent colonies. कौन होची recombinant plasmid plasmid तारे recombination ही जाइछि ता माने मोर gene of interest ता already insert ही जाइछि सेठी हैला gene of interest already सेठी insert ही जाइछि तो gene of interest यदि insert ही जाइछि lactate gene ता मोर disrupt ही जाइछि हैला lactate gene is already disrupted तो जा ता द्वारा हमें तो लास्ट स्लाइड रे डिस्कशन करले लैक्सेट जीन डिस्ट्रप्ट हे गला माने हमरो आउ से बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करिबनी कि एक्सगाल मीडियम रे सी हमरो ब्लू कलर कॉलोनीज दबनी तो को कॉलोनीज दबो इट विल गिव व्हाइट कलर कॉलोनीज है ना इट विल गिव व्हाइट कलर कॉलोनीज वेरी गुड एवरीवन वेरी नेक्स्ट the principal reason for using the thermostable DNA polymerase in the PCR is that functions efficiently after repeated heating cycles, possesses reverse transcriptase activity, synthesizes RNA primers, requires no template DNA. कौन हबो तन्मय सलोनी विश्व ठीक अछि संपूर्ण तृप्ति पीसीआर रे हमें जो डीएनए पॉलीमरेज टा यूज करछे सेटा थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया रो हमें डिराइव करछे से थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया टा कोन से थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया हैला थर्मस एक्वाटिकस होना थर्मस एक्वाटिकस अब ए थर्मस एक्वाटिकस रो ही डिराइव करके हमें टैग पॉलीमरेज सेटा डिराइव हेछि बोले को टैग पॉलीमरेज हला ए अच्छा पक्का तो ए ठीक अछि इट फंक्शंस एफिशिएंटली आफ्टर रिपीटेड हीटिंग साइकल्स जेहेतु पीसीआर रो जो हमर जो तीनटा स्टेप रहउची डीनेचुरेशन हला एनिलिंग हला आउ एक्सटेंशन हला ए तीनटा जाको हमर बहुत ही हाई टेम्परेचर रे होउची हैला जेमिति कि डीनेचुरेशन केते टेम्परेचर रे होउची 92 टू 94 डिग्री सेल्सियस रे होउची एनिलिंग हमर 72 डिग्री सेल्सियस पाटापाटी होउची 54 रो 55 डिग्री सेल्सियस पाटापाटी होउची एनिलिंग हैला एक्सटेंशन रे 72 डिग्री सेल्सियस पाटापाटी होउची ता माने देखिला केते हाई टेम्परेचर रे मध्य जदी मोर गोटे पॉलीमरेज एंजाइम रे सर्वाइव करिया को थिबो ताहाले मु सेही प्रकार पॉलीमरेज एंजाइम रे डिराइव करबी ना हैला ता माने से रिपीटेड हीटिंग साइकिल को सर्वाइव कर पाला बडे एफिशिएंटली से जगह काम करि पाला बडे हमें थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया हम डिराइव करिचे डीएनए पॉलीमरेज पर टैग पॉलीमरेज वेरी गुड 7 restriction endonuclease generally recognize random nucleotide sequences palindromic sequences intronic regions only single stranded DNA exclusively yes 54 or 55 हां मनोज मानसी ठीक अछि कौन हबो 7 डबी मनोस्मिता बी पैलिनोड्रोमिक चलो स्टार्ट हे गला टिके पैलिनोड्रोमिक रो हमर टिके एग्जांपल गुडा को टिके भर्ती कर देलो पैलिनोड्रोमिक एग्जांपल गुडा को टिके देखे कोन पैलिनोड्रोमिक माने कोन गोटे एग्जांपल आरंभ करो पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंसेस मु बहिर एग्जांपल ला दोची हला तमे तमर टिके रियल लाइफ एग्जांपल दे दियो तो बहिर एग्जांपल अनुसार हमर इको R1 गोटे अछि कोन
गोटे क्लोनिंग साइट टे जी की GAATTC GAATTC से ए टाइप रो सीक्वेंस को हमरा फॉलो करछि हैला ए टाइप रो सीक्वेंस को फॉलो करछि ठीक अछि हां GAATTC मलयालम मलयालम हां मैम मैडम हां आओ 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 हां ठीक अछि ठीक अछि हैला वेरी गुड जा ताले पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंसेस को माने आगाड पढिले जेमिति पछाड पढिले सेमिति हैला हां मैडम मैम ठीक अछि तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा क्वेश्चन नंबर 8 which step of the PCR determine the specificity of the amplification which step of the PCR determines the specificity of the amplification you are back Sumit you are back हां ठीक अछि कटक इन ओडिया यस लक्ष्मी कटक मैम पजना ठीक अछि मॉम इट्टा माटी एडा गोटे नुआडे सुनिली मु वेरी गुड इट्टा माटी कोन गोटे से कहलानी ए बी कोन हबो डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन डा कोडी होची हमर एनीलिंग रे होची ना एनीलिंग रे होची 54 रो 55 डिग्री सेल्सियस रे हमर एम्प्लीफिकेशन रो स्पेसिफिसिटी मध्ये जाना पड़छ है ना जाना पड़छ चलो नेक्स्ट competent bacterial cells are prepared primarily to increase the plasmid replication enhance the restriction enzyme activity facilitate the uptake of the foreign DNA improve the beta galactosidase synthesis कौन होची competent bacterial cells are prepared to हमें bacterial cell को काहे प्रिपेयर करछे कौन दरकार पड़छ तमे माने प्रिपेयर होछ जाना पड़छ ओयूटी क्रैक करबो हां के नीट क्रैक करबो के कोन करबो हैला तमे माने निजु निज कॉम्पिटेंट बनौछ व्हाई इज द नीड बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हेबा कोन दरकार बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हेबा कोन दरकार बी बी पक्का पक्का श्योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी कोन पे दरकार रे सेठी बैक्टीरियल सेल रे हां दिव्या सी वेरी गुड सी हबो अननोन यूजर बी काहे हबो हां भाई बी काहे हबो हैप्पी ठीक अछि सी हबो तो फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ द फॉरेन डीएनए क्वेश्चन ना बुझुछ ना नहीं से पचाची बैक्टीरियल सेल्स को हमें कॉम्पिटेंट करछे एमिति किछि मॉडिफाई करछे हमें बैक्टीरियल सेल्स रे कोन पे मॉडिफाई करछे बैक्टीरियल सेल को सो दैट से फॉरेन डीएनए को नहीं पारिबो से फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करि पारिबो सेहिति में हैला हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को नेकी ता बॉडी भीतर से मल्टीप्लाई करि पारिबो सेहिति में हमें तक कॉम्पिटेंट बनौछे सिंपल हैला सी इज द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 the movement of DNA towards the anode during the electrophoresis is due to positive charge on the deoxyribose negative charge on the phosphate group attraction between the base and agarose positive charge on the nitrogenous base see ठीक अछि एबे एडा को movement of the DNA towards the anode during the electrophoresis रे हमें गोटे जेल मीडियम नोचे जो जेल मीडियम ता के सीडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करछि इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे नोचे जोडा कि हमर मूवमेंट डीएनए रो मूवमेंट को देखौछि हैला तो कोन हबो इनकम्प्लीट त्रिरंगा मैडम तन्मय एपे आनी भी देखिबो छता खोले कि पूरा कंप्लीट कर देबी हाउ बी ए ये के मध्ये बी कहलानी पॉजिटिव चार्ज पड़ा है लगे डीऑक्सीराइबोज रे नेगेटिव चार्ज ऑन दी फॉस्फेट ग्रुप रो नेगेटिव चार्ज जो को डीएनए रा मध्ये होचंदी हमर नेगेटिवली चार्ज डीएनए मध्ये होचंदी हमर नेगेटिवली चार्ज डीएनए हमर मूव क्वाड को करबो एनोड आडू को मूव करबो हैला एनोड आडू को मूव करबो जोडा कि कोटे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ता smaller the fragment of the DNA the faster it will move हैला smaller the fragment of the DNA faster it will move next which vector feature ensures the independent replication inside the host cell selectable marker multiple cloning site origin of replication promoter vector रो को फीचर ता ताको एंश्योर करछि जे निजे निजे निजर इंडिपेंडेंस तार अछि से निजे निजर रेप्लिकेशन करि परिबो सी
होस्ट सेल रो डीएनए उपरे बा होस्ट सेल रो प्रोसेसिंग उपरे कोनोसी प्रकार डिपेंडेंसी नाही तार कोन एंदी फीचर ता अछि जोडा कि तार रेप्लिकेशन निजे करि परछि से निजर रेप्लिकेशन निजे करि परछि कोन हम गोटे प्रॉपर्टी सेटा हला कोन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ए गोटे प्रॉपर्टी जगु ए माड खाइबो सब देखिबो ए के कहउछ सी हब आंसर हला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जगु प्लाज्मिड रे मध्ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अछि सेति पय बोली तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेति पय बोली सेल्फ रेप्लिकेटिंग हला निजर सी रेप्लिकेशन निजे इनिशिएट करि पारे नेक्स्ट आसो 11 12 in recombinant DNA technology DNA ligase catalyzes the formation of hydrogen bond glycosidic bond phosphodiester bond peptide bond origin of replication हाँ ठीक कौन हम सी सी ओम प्रकाश फॉस्फोडाइस्टर है ना ठीक अच्छे सुजाता गौरव तृप्ति आयुष्मान दिव्या प्रत्युष बसंती सौम्या वेरी गुड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन करछि सी कैटलाइज करछि द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए लाइगेज कैटलाइजेस कौन फॉर्म करछि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स a stirred tank bioreactor provide efficient mixing mainly through water bath circulation rotating impellers vacuum pumps UV irradiation कौन हबो स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर दीटा प्रकार बायोरिएक्टर अछि गोटे हला स्पास्ट आ गोटे हला स्टीयर्ड टैंक स्पास्ट आउ स्टीयर्ड टैंक तो कौन हबो आंसर एठी स्टीयर्ड टैंक रे हमर अछि इंपेलर्स अछि नहीं इंपेलर्स अछि इंपेलर्स रो मूवमेंट जगु बी बी ठीक बी इंपेलर्स रो मूवमेंट जगु हमर ए टाइप next which transformation method temporarily increases the membrane permeability by applying an electrical pulse heat shock electroporation microinjection liquefaction कौन हबो question number 14 everyone question number 14 b b पक्का तो ना पुणी माड़ खाइब के पुणी ए कहलानी के पुणी सी कहलानी हाँ आ के डी कह दियो हाँ membrane permeability को depending on the electrical pulse apply करिगिरी हमर केमिदी membrane रो permeability बढ़ुची electroporation करिगिरी heat shock रे हमें temperature को नेगिरी करूथिले माइक्रो इंजेक्शन दा एनिमल रे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ता ठीक अछि animal transformation method ta chalo next question number 15 the function of bromophenol blue in gel electrophoresis is to DNA that stain the DNA permanently digest the DNA act as a tracking dye neutralize the buffer pH ना आपण बाडे माने कोन बाडे परिबेनी ना कोन बाडे परिबेनी ना कोन हिंदी गोटे माने गोटे अंडर एस्टिमेट करनी मत एबीसीडी रजनी ये तो आग माड खाइबो ये कौन अगर एमती रोग देखलानी कौन हम एटा परमानेंटली स्टेन हबनी सुन कौन भी जिनस हम परमानेंटली स्टेन हबनी हैला गोटे डाई हिसाब रे यूज होची ट्रैकिंग डाई रा माने कोन हमें जानि छ जो इथिडियम ब्रोमाइड हमें जो यूज करू नथिले कि इथिडियम ब्रोमाइड यूज होतला हमर स्टेनिंग पर्पस पई जोटा कि हमर डीएनए रो मूवमेंट हे गला पर इथिडियम ब्रोमाइड को हम इंट्रोड्यूस करी यूवी लाइट देखौतले जा द्वारा कि से हमर कोन होची हमर विजिबल होतला ठीक अछि सेटा हमर विजिबल होतला ठीक एडा हमर ट्रैकिंग डाई माने हमर जो डीएनए दा मूव करूनी कि से जेल भितर हेगी हैला जेल भितर हेगी जो मूव करूची से जेल भितर मूव करला को देखिबा पई बोली हमें ब्रोमोफिनॉल यूज करू हैला सी विल बी करेक्ट ठीक अछि हाँ एक्ट एज अ ट्रैकिंग डाई टिके एनसीईआरटी रो टिके तेढे के पचार देले सब अटकी जाउछ ना सब अटकी जाउछ सर मैम को माड मन पड़ुची ना हां हेले ताले माड खाइबी नियाते 16
why are RNA molecule removed during the genomic DNA isolation? कहीं RNA molecule को हमें DNA isolation time रे remove करचे, कहीं remove करचे को enzyme द्वारा remove करोचे ताकि RNase enzyme द्वारा ताको digest करे दोचे, नहीं की? हाँ, भलो टीचर बाड़न देनी? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा. कौन हबा? Why are RNA molecules removed during the DNA isolation process? 16? 16? Yes. Very good. Very good. They contaminate the DNA preparation and interfere with the downstreaming analysis. आशा करुचे एटा बड़ा ऑप्शन देखिकी के मारिनो आंसर ऑप्शन को पढ़ी की ठीक भाबरे मारिचो जे बड़ा ऑप्शन ता एटा ठीक हेतिबो बोली भाबी मारि देबो सेउडा को देखिबो फसी होई जाय हैला एटा ठीक अछि आंसर दे कंटामिनेट द डीएनए प्रिपरेशन एंड इंटरफियर विथ द डाउनस्ट्रीमिंग एनालिसिस सेति पय बोली आरएनए मॉलिक्यूल्स गुडा को रिमूव करा हे जाय हैला आरएनए मॉलिक्यूल्स गुडा को सब रिमूव करा हे जाय नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 17 द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द पीसीआर प्रोडक्ट अकर्स बिकॉज़ exponential increase in the PCR product occurs because ये बड़ा ऑप्शन देखिए मारी से पॉसिबल बुझिला एक्सपोनेंशियल इंक्रीज माने कोन हमरा इंक्रीज हे जाउते हां तन्ने सेंती करछि ना ठीक मु जानि पाइली मु जानि पाइली तमरो मनर कथा मु ठीक बुझी पाउछि सेही बाट देगी ही तो मु एति की जाई आसी छी आई कैन अंडरस्टैंड यू हमें भी एमिति ट्रिक करू हला मु भी एमिति ट्रिक करे तो एडी कोन पीसीआर रे हमर डीएनए डबल हे जाउछि एवरी एम्प्लीफिकेशन साइकिल रे सेति मै बोली हमर पीसीआर प्रोडक्ट रे इंक्रीज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज रे देखा जाउछि माने पूरा एकदम साइंगिना बढ़ियो हला साइंगिना चलो A recombinant plasmid lacking an origin of replication will most likely replicate normally, produce blue colonies, fail to replicate within the host cell, become resistant to the antibiotics. Unlimited increase, yes. See, हाँ origin of replication नथी तो replication हबो कुआडो origin replication नहीं तो नहीं हला मॉर्निंग चैनल यू लर्न तमे पाठ पढे के एते जे माने तमे दिन राति सब भूली गलण ना कोन दिन राति भूली गलणी तमे fail to replicate within the host cells next 19 which enzyme removes the DNA contamination during the DNA isolation just discuss कर देली already फटाफट आंसर कर दियो नेक्स्ट बा which enzyme removes the DNA contamination during the DNA isolation contamination काहे हमर आरएनए को काहे हम रिमूव करोथिले सीटा बडो अछि हां सीटा बडो अछि हां मैं कहून आंसर को सेटा तापर कहबी तो कहि देली फसिबो सब फसिबो हां बी हबो आरएनएस हैला रिमूव की करछि आरएनए कंटामिनेशन को आरएनएस एंजाइम कंट्रीब्यूट हैना आरएनएस एंजाइम आ बाकी बाकी ए दीटा भीतर तमे कंफ्यूज होनो तो आरएनएस आ आरएनएस ए दीटा भीतर डिफरेंस जानछ त कोन आरएनएस रो माने हला माने जेमिति की हला गोटे संध्या आ गोटे संध्या आ गोटे संध्या आ गोटे संध्या मेनी संध्यास हला सेमिति गोटे दीपक आ गोटे दीपक आ गोटे दीपक आ गोटे दीपक दीपक्स गोटे विजय आ गोटे विजय आ गोटे विजय विजयस सेमिति गोटे आरएनए आ गोटे आरएनए आ गोटे आरएनए आरएनएस ठीक अछि आ एडा होछि कोन एएससी जो जगह रे लागिला सेडा हमर एंजाइम है ना सेडा हमर एंजाइम ठीक नेक्स्ट तो एडी हला ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 the selectable marker present in the cloning vectors is mainly used to enhance the transcription identify the transform cells increase the plasmid size denature the proteins तो selectable marker हमर काहे यूज होछि
यस हां 20 डा बी 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 ओके आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल ट्रांसफॉर्मेशन रा माने कोन ट्रांसफॉर्मेशन रा माने कोन ट्रांसफॉर्मेशन रा माने कोन ट्रांसफॉर्मेशन रा माने होची द introduction of the recombinant plasmid into the host cell तो सेडा हमरा आइडेंटिफाई करबा पई कि रिकॉम्बिनेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन ही कि न ही से जिंस पई बोले हमको सिलेक्टेबल मार्कर दरकार और सिलेक्टेबल मार्कर रे बेले बेले हम माने प्रायतः बेले बेले नहीं प्रायतः व्हाट वी यूज इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कोन कोन अछि गोटे अछि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट आ गोटे अछि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नेक्स्ट 21 which feature distinguishes the taq DNA polymerase from DNA polymerase 1 of the E. coli reverse transcriptase activity thermostability ability to digest the RNA requirement of the ATP taq DNA polymerase how is it different from the DNA polymerase मतलब DNA replication करोचे taq DNA polymerase मतलब DNA replication करोचे तो how is it different from each other taq ता केमिति different हां DNA फॉरेन एंटर करिछि कि न होइछि हां कंफर्म ठीक अछि अननोन यूजर मानसी ठीक अछि हां शुभ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यस 21 ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान तृप्ति प्रियव्रत बी ओके ठीक अछि थर्मोस्टेबिलिटी हैला थर्मोस्टेबिलिटी प्रोवाइड करा छी तो टैग ता हमर कोड आसीछि गोटे थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया रु थर्मस एक्वाटिकस ठीक अच्छे टी और ए क्यू पॉलीमरेज सर गुड मॉर्निंग अरे निदर उठ चैनल यू लर्न हाँ गुड आफ्टरनून चंद्रशेखर नेक्स्ट 22 in blue white screening xgal serves as antibiotic artificial substrate for beta galactosidase restriction enzyme DNA stain कौन हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग रे एक्स गाल को भलिया हमर कामरे आसुची ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जोटा कि हमर कोप्लाज्मिड रे हम यूज करूथिले PUC88 जहार की लैग जेड जीन थिला आउ सी हमर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर तो कौन होबो बी बी artificial substrate for the beta galactosidase हैला artificial substrate आउ जनरली एटा जेहेतु हमर कलरेशन पई बोली रिस्पांसिबल तो एटा को हमर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोली मते कहै क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हैला प्रणाम सनातन प्रणाम नेक्स्ट 23 if no DNA band are visible after electrophoresis despite the successful PCR the most probable reason is absence of DNA staining excess primer concentration high agarose concentration alone low annealing temperature जदि पीसीआर प्रॉपर्ली करिगिरी हमें नंबर ऑफ डीएनए बढ़े दीजे ता परे हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे पकेले फिर भी हमको जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रो बैंड उडा का देखा जाउनी कोन हेतिबो रीजन दा कोन हेतिबो रीजन दा the most probable reason is a c के बी और डी भी कह दियो सी हाई agarose concentration हाँ हाई agarose concentration देखिलो alone कौन केवल agarose concentration दा अधिका अच्छी बोली हमको बैंड देखा जाउनी ना कोन this is not the only reason staining दा absent पड़ी जदि प्रॉपर स्टेनिंग न होई थिबो ताले हमको बैंड्स देखा जिबो नाही जते सक्सेसफुली कर दै थाओ पीसीआर है ना पीडीएफ ए पठे दोचे बेरो पठे देबी संजय क्लास सरू शेयर करबी डोंट वरी है ना ए हबो आंसर ए
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. The principal function of the multiple cloning site MCS in a plasmid vector is to increase the plasmid copy number, provide several unique restriction sites, synthesize the proteins, produce antibiotics. How? It's okay. भूलेगा ना. ठीक है. हाँ कांदनी. It's okay. Sorry कुआनी. इतने मने में बहुत मेरा दिल बहुत बड़ा है. मैंने माफ कर दिया. It's okay. It's okay. हाँ. 24 option number B. Option number B. It provides several unique restriction sites. Very good. जोड़ा कि हमारे MCS multiple cloning sites बोली कहा जाए. है ना? Multiple cloning sites बोली कहा जाए. चलो. Next question number 25. Which of the following is not a characteristic of an ideal cloning vector? Ideal cloning vector रो कोटा हमारे कोटे character नुहे. कोटा character नुहे. हेलो देखी ना दिलो. गोटे क्लोनिंग वेक्टर हेबा पई बोली कोन कोन क्राइटेरिया दरकार जेमिति हमहु जेमिति गोटे मानकर ड्रेस किनिया को जाउछे बोली कहले हला हमें गोटे सामान्य ड्रेस किनिया पई बोली केते क्राइटेरिया देखि दउछे कि कलर एया हेबा दरकार हला हमरो ए ए एतिके वर्क हेबा दरकार मटेरियल ए टाइप हेबा दरकार हां तो सेही जिनसडा ताने हमरो वेक्टर रो मते तो रहइबा दरकार ना नहीं तो कोन क्राइटेरिया फॉलो करूची सी कोन क्राइटेरिया वेक्टर टा हमर स्मॉल साइज हेबा दरकार सो दैट सी होस्ट सेल को आराम से पसी परिबो रिस्ट्रिक्शन साइट तारे यूनिक प्रेजेंट रहबा दरकार हैला जोडा कि ताकू हमर सीक्वेंस प्रोड्यूस करि परिबो सिलेक्टेबल मार्कर जीन मध्ये रहबा दरकार सो दैट हमर सिलेक्टेबल मार्कर रहि करी हमर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेशन जानि परिबो तेतले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नथिबो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नथिबो तो से रेप्लिकेट ही करि परिबोनी ताले से काहे का प्लाज्मिड हेबा पई बोली हमर कोन रहबा दरकार जानि प्लाज्मिड बा वेक्टर हेबा पई बोली हमर जो क्राइटेरिया दरकार it is plasmid definition कोन it is the extra chromosomal self replicating double stranded circular DNA है ना गोटे प्लाज्मिड ए चारटा क्राइटेरिया फॉलो करले ही कुआ जिवो है ना ए चारटा क्राइटेरिया फॉलो करले ही कुआ जिवो संजे निशा भी अछि हां से थाउ टिके चलिबो हैला एग्जाम पाखे होची ना से गोटे करंदी सेंती चल ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस द फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव इज यूजुअली टू एम्प्लीफाई द डीएनए प्यूरिफाई द डिजायर्ड प्रोडक्ट insert the plasmid into the bacteria digest the genomic DNA digest this genomic DNA वाह संजय वो माने से जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड रे एंटर into the heart electroporation method रे वाह 26 टा बी purify the desired product हला हमर डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस रे कोन होची प्यूरिफिकेशन पैकेजिंग मार्केटिंग प्यूरिफिकेशन पैकेजिंग मार्केटिंग हला तो एडी प्यूरिफाई होची हमर डिजायर्ड प्रोडक्ट ता हला प्यूरिफाई हेगी हमर ये जाते the role of the calcium chloride during the bacterial transformation is to digest the plasmid DNA increase the membrane permeability for DNA uptake inactivate the restriction enzyme prevent the DNA replication Question number 27. Be happy. Aishman, Manusmita, Lata Manjari, Aishman, Priyavata, increase the membrane permeability for the DNA uptake. It is a co-prakar method, car method, right? It is a transformation method, bacterial transformation method. Bacterial transformation method, हमारा heat shock और electroporation मध्ये आसुची ना नहीं, है ना? Bacterial transformation method रे हमारा electroporation और heat shock मध्ये आसुची. और प्लांट रे ट्रांसफॉर्मेशन करिया को हेले कोन प्लांट सेल रो ट्रांसफॉर्मेशन पई बोली कोन मेथड और एनिमल सेल रो ट्रांसफॉर्मेशन पई बोली कोन मेथड कहलो देखबा आपण क्लास रे मजा आसेनी
आसेनी माने कोन कहयो चाहूछ को प्लांट सेल रो एनिमल सेल रो ट्रांसफॉर्मेशन उडा कहि देलो देखि दिके केमिति तमे पाठ पढछ टिके देखिबे गन ब्लास्ट हे भगवान अननोन यूजर समस्त को अननोन कर देबो कि तमे कौन मेथड कौन ना गन ब्लास्ट प्लांट रे बायोलिस्टिक यस हां मजा आसी गला अच्छा अच्छा जीन गन यस बायोलिस्टिक्स ठीक अछि एडा हला जीन गन आ एडा हला कोन माइक्रो इंजेक्शन आ गोटे कहला मते जीन गन रे हमर जो बुलेट टा यूज होची सेडा कोथरे मेड अप ऑफ हां आईआईटी खड़गपुर हाँ जीन गन जीन गन बुलेट टा कौन यूज होची के तार इनमें सारा बहुत यूटेड बट दे डिफर सिग्निफिकेंटली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड फंक्शन हां स्नेहश्री बायोलिस्टिक मेथड को गोल्ड कॉपर नहीं टंगस्टन है ना गोल्ड या टंगस्टन काहेकि ना एड़ा सब इनर्ट मेटल उडा है ना नॉन रिएक्टिव था से चलो हे गला रिवीजन ट्रांसफॉर्मेशन रे केमोस्टैट डिफर्स फ्रॉम ए बैच बायोरिएक्टर because it operates continuously with fresh nutrient medium supply lacks aeration uses only fungal cultures does not require agitation गुली मारी बारे एडा को क्वेश्चन नंबर 28 ए chemostat differ from batch bioreactor काहेकि ना एडा रे हमर बैच बायोरिएक्टर रे ऑपरेट करछि कंटीन्यूअसली ऑपरेट करछि आ फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम मध्ये हमर सप्लाई चली थाउछि याड एपटे हमर कर थाउछि ठीक अछि हां नेक्स्ट 29 restriction enzymes are naturally produced by bacteria primarily for DNA replication protein synthesis DNA defense against the invading bacteriophages RNA degradation restriction enzyme गुडा हमें बैक्टीरिया रो डिराइव करिछ ना तो बैक्टीरिया डिराइव करछे माने नेचुरली हम बैक्टीरिया रे प्रेजेंट थिबो नियाती तो सेटा हमर बैक्टीरिया रे नेचुरली काहे प्रेजेंट अछि कोन दरकार आईआईटी कंदर बड़ो आंसर अछि हैं बड़ो आंसर अछि आईआईटी स्टूडेंट बायो पढ़ी हैं हां 29C डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरियोफेजेस जेमिति हम बॉडी रे जेमिति हमर डाइसर प्रोटीन अछि एंड देयर आर सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म जोटा कि फॉरेन पैथोजेन अगेंस्ट हम बॉडी को प्रोटेक्शन दोछि सेमिति बैक्टीरिया रे बॉडी रे मध्ये जेतले फॉरेन पैथोजेन एंटर करबो ना ता पाखरे गोटे अछि हमर कोन ना स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को बा स्पेसिफिक कोड को सी डिटेक्ट कर देइकरी हमर कोन करिवो से जगह से कट करिवो हैला कट करके सेटा को नष्ट कर देबो तो तार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होछि ता पई बोले गोटे डिफेंस मैकेनिज्म तो डिफेंस हिसाब रे प्रेजेंट अछि बट जोटा को कि हमें काढी के हमें तार फायदा उठे दोछे नहीं भी हमें फायदा उठे दोछे चलो क्वेश्चन नंबर 30 which factor is most critical for obtaining the sharp DNA band during the agarose gel electrophoresis appropriate agarose concentration relative to the fragment size high voltage irrespective of the fragment size excess loading dye increased primer concentration which factor is most critical for obtaining the sharp DNA band proper पूरा एकदम तेच्छा DNA band जदी काढिवार अछि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ताले कोन दरकार जेमिति कि प्रॉपर रोसई हे ओडे हब्बो बोली कहला हम ओडे ऊपर ओडे तड़काडे मारिबा दरकार सेमिति हमरा अप्रोप्रिएट हबा दरकार एगरोस कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड टू द फ्रैगमेंट साइज हैला रिलेटेड टू द फ्रैगमेंट साइज तो एडा कोन हबो appropriate agarose concentration and fragment size होते related अरे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे साइज रो बेसिस रे ही हम सेपरेशन करोचे साइज रो बेसिस रे ही हम सेपरेशन करोचे तो सेडा निहाती हम इरेस्पेक्टिव केमिति होबो जे इरेस्पेक्टिव ऑफ द फ्रैगमेंट साइज मारी बके बसी हां से सब जिंसो नहीं ठीक नेक्स्ट
Question number 31. A restriction enzyme produces blunt ends when it leaves DNA at identical position on both the strands, generate 5 dash overhangs, generate 3 dash overhangs, leaves only one strand of the DNA. Yes. For a concept କୁହନ୍ତି କଣ ମନେ ନାହିଁ କଣଟା ମନେ ନାହିଁ ତମର restriction enzyme produces blunt ends देखो हमर दी प्रकार restriction enzyme अछि हला गोटे हला exonuclease गोटे हला endonuclease exonuclease कोन करछि हमर दीटा जक एंड रे आइडेंटिकल पोजीशन रे कट करछि जा द्वारा कि हमर स्टिकी एंड्स माने हमर ओवरहैंगिंग एंड्स गुडा को प्रोड्यूस होनी endonuclease कोन करछि एमि मझी मझी रे हला एमि मझी मझी रे हला कबाब में हड्डी है ग्रीन दी मझी मझी रे से करूछि जा द्वारा कि हमर एमि ओवरहैंगिंग पोजीशन सुडा क्रिएट हेबा जबु एडी हमर स्टिकी एंड सुडा को सब प्रोड्यूस हला स्टिकी एंड सुडा को सब प्रोड्यूस ठीक तो एडा हमर कोन हो ऑप्शन नंबर ए हला ऑप्शन नंबर ए आउ एडा ओवरहैंगिंग पोजीशन रे हमर स्टिकी प्रोड्यूस हो स्टिकी एंड्स जोडा कि हमर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रे हमर प्रोड्यूस हे खाउछ क्वेश्चन नंबर 32 which of the following would not be suitable as a selectable marker in a cloning vector not a selectable marker gene coding for ampicillin resistance, gene coding for tetracycline resistance, gene encoding for kanamycin resistance, origin of replication. कोडा हमर गोटे selectable marker हेई परिबनी कोडा गोटे हमर selectable marker हेई परिबनी star star not star star हला पूरा bold not a selectable marker exoblant and endostick so बड़ आंसर ही ठीक आंसर होची अच्छा अच्छा बी सी सी बी जानी दिले इतने पसिबो तमे एटा देई देइची ना बही रे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन देई देइची ना बही रे तो एटा तो हमर सिलेक्टेबल मार्कर बोली जानची अरे मु कोन कहि देली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उडा को जनरली हमर सिलेक्टेबल मार्कर रे यूज होची से भीतर हम बुक रे खाली टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन बिसरे देइची कानामाइसिन को तो देइनी कानामाइसिन को तो देइनी कानामाइसिन ना मते गोटे हमर एंटीबायोटिक ते है बुझी पारलो कानामाइसिन ना मते गोटे एंटीबायोटिक तो आर रेजिस्टेंस मते हमर सिलेक्टेबल मार्कर रे यूज हेई परिबो origin of replication थोड़ी हम selectable marker रे यूज होची origin of replication दा हमर replication origin करिया हेल्प होची ना ऑप्शन नंबर टी हिजबो एडा कोन हमर selectable marker हम कहला एडा कोन हबो selectable marker 33 the purpose of loading DNA sample into the wells prepared in the agarose gel is to ensure that DNA fragment migrate uniformly from a fixed starting point DNA remain permanently trapped in the gel DNA fragment become denatured before migration restriction enzyme continue digestion during the electrophoresis wells रे हमें काहेंगे दोचे देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एडी हमर वेल्स अछि एडी हमें सब पुट करते कोन डीएनए फ्रैगमेंट उडा तापर ये हमर मूव करी करी जाउचे एग्रोस जेल रो मीडियम रे हला अकॉर्डिंग टू इट्स साइज हां जानते हो डी हम बोली अच्छा अच्छा हां आउट ऑफ एनसीईआरटी एमनी ही आसे अर्पिता डायरेक्ट क्वेश्चन रे आसीबनी तमर एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी ठीक अछि ऑप्शन उडा करे से गोळेगिरी पचारियो तमे क्लेम भी करि परिबनी चैलेंज भी करि परिबनी जेनसोला जे आउट ऑफ एनसीईआरटी ठीक अछि हां ए बी restriction enzyme electrophoresis time रे कंटिन्यू करिबो डाइजेशन मार तो खाइबनी तमे एडा कोडा होबो डीएनए फ्रैगमेंट डीनेचर काहे होबो इलेक्ट्रोफोरेसिस रे permanently trapped in the cell movement करिबो से निहाती ठीक अछि डीएनए फ्रैगमेंट माइग्रेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट गोटे स्टार्टिंग पॉइंट रो हैला समस्त एका संगे बाहरिबे 1 2 3 2 1 हैला 3 2 1 हमरो हेगिरी सब बाहरिबे सबुडो छोट 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 फ्रैगमेंट उडा सबुडो आगो को जेबे बड़ फ्रैगमेंट उडा हम पछे रहि जे हैला ठीक कह जायसमान हो वेरी गुड 33 हैला ए 34 which factor is most likely to decrease the efficiency of the PCR amplification presence of inhibitors such as phenol in the DNA sample use of thermostable DNA polymerase addition of magnesium ions proper primer designing कोटा हमर PCR रो एफिशिएंसी टा को कमे दबो को फैक्टर टा PCR रो एफिशिएंसी को कमे दबो
कोड़ा कमाउची अरे पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कमाउची जदी जीए सी हला हमर के कि गोटे इनहिबिटर थिबो निहाती हैला कि गोटे इनहिबिटर थिबो अरे किछि नले ऑप्शन तक एलिमिनेट करी करी पहुंची जाओ ना एलिमिनेट करी करी पहुंची जाओ पीसीआर तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दरकार मैग्नीशियम आयन मध्ये हमर एडिशन होतोंदी प्राइमर मध्ये डिजाइनिंग हेले ही जे कि हमर एम्प्लीफिकेशन हबो हैला तो इनहिबिटर रहिले हमर कोन हबो ना पीसीआर एफिशिएंसी रा कमी जी नेक्स्ट a plasmid vector carrying the two antibiotic resistant genes allows the researchers to determine the recombinant plasmid through the insertional inactivation, increase the bacterial mutation rate, prevent the plasmid replication, eliminate the need for restriction enzymes. Plasmid vector रे हमर दीटा antibiotic resistant genes गुडा जनरली हमें रखुचे हैला कम पई रखुचे सो दैट हमर बेटर कोन हे परिबो सिलेक्टेबल मार्कर रखी गिरी हमने ट्रांसफॉर्मेशन टाको बेटर करि परिबे हैला हां यील्ड लो कर दबो आयुष्मान हैला इनहिबिटर टा ऐड कर देले यील्ड लो ठीक 35 कौन हम मनोस्मिता तृप्तिमयी सुजाता ओम प्रकाश कानामाइसिन रेजिस्टेंस कौन कानामाइसिन मध्ये गोटे प्रकार एंटीबायोटिक टा ओम प्रकाश जेमिति टेट्रासाइक्लिन गोटे एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन गोटे एंटीबायोटिक कानामाइसिन मध्ये गोटे एंटीबायोटिक ठीक अछि अजिथ्रोमाइसिन मध्ये गोटे एंटीबायोटिक ठीक अछि तो ए गेला आंसर ए सबु सबु मु जानि परछ सबु बड़ ऑप्शन देखि मारुछ तम चाले कि मु ठीक धरि परछ तम चाले कि मु ठीक धरि परछ हला कोन हला दीटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहिला हमें कोन जे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करके हम जानि परिबा ट्रांसफॉर्मेशन हिची कि न नेक्स्ट the purpose of maintaining a constant pH in a bioreactor is to ensure optimal microbial growth and enzyme activity increase the agarose concentration prevent the plasmid insertion denature the recombinant proteins denature the recombinant proteins করছনা সেন্দি ঠিক কইলো সত্য কইলো আজ্ঞা হ্যাঁ না আচ্ছা আচ্ছা 36 কোন হবো অপশন এ অপশন এ রেডি হলা অপশন ए ऑप्टिमल हमर मेंटेन कांस्टेंट पीएच कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करले हमर माइक्रोबियल ग्रोथ रा मध्ये ऑप्टिमम हबो आउ एका माने ग्रोथ रा हमर सिग्निफिकेंटली बेटर हबो ठीक अछि as compared to जदि हमें पीएच पर सपोर्ट कर देबा ताले माइक्रोब प्रोडक्ट हम निहाती रिएक्ट करबे से जगह रे ग्रोथ रा हमर प्रॉपर हे परिबे 37 the sticky ends generated by EcoR1 are advantageous because they facilitate the complementary base pairing between the DNA fragment prevent the DNA ligase activity eliminate the need for the cloning vector destroy the palindromic sequences sticky ends generated by EcoR1 are advantageous because they 37 gaming chinu a इतिश्री ए प्रजना ए मनोस्मिता facilitate the complementary base pairing between the DNA fragment ଆଉ इको R1 हमर को जगह को माने कोडा को हमर ये करूची कोडा को हमर डिटेक्ट करची को सीक्वेंस टा को GAATTC GAATTC हला एडा को से डिटेक्ट करची एडा को से डिटेक्ट करची ए ठीक अछि which statement correctly distinguishes genomic DNA libraries from the cDNA libraries cDNA माने हला complementary DNA आपण भलो से पढी परिबे बोली करूची मु पढिबी हां सब बड़ आंसर ठीक होउची रुओ रुओ हसिबनी गोटे दिन सी अच्छा सी हबो हो हमें जीनोमिक लाइब्रेरीज रे कोन करछु ना जीनोम को कलेक्ट करके रखुछु आ कॉम्प्लीमेंटरी लाइब्रेरीज रे हमरो एक्सप्रेस जीन जो जीन्स उडा एक्सप्रेशन होची माने जीनोमिक लाइब्रेरीज रे एंटायर जीन ता बा एंटायर डीएनए सेगमेंट ता हमरो रखा होची हला बाकी कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए लाइब्रेरी रे हमरो एक्सप्रेशन जो जीन उडा एक्सप्रेस करची से जीन उडा रखा हला ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट which component of the PCR determine the region of the DNA to be amplified DNA polymerase primer DNTPs magnesium ion कौन होगा
कोडा बुझे देबी सुप्स कौन तुम ना जानी पारनी मु कोडा बुझे भी कोचो नंबर को पीसीआर रो को फैक्टर ता हमर कहूची जे को रीजन हमर एम्प्लीफिकेशन हबो सी सी ए सी हैं कोडो हमर एम्प्लीफिकेशन हबो को रीजन रो एम्प्लीफिकेशन हबो सेटा के कहबो रे के कहबो प्राइमर कहबो डीएनए पॉलीमरेज तो एम्प्लीफिकेशन ताको जोड़ी दबो से इडु करी बसी जोड़ो दबो से सेडो एम्प्लीफिकेशन करी जीवो हैला आरंभ जोड़ो हबो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जगह हम प्राइमर ऐड हबो प्राइमर ऐड हला परे तापर जगह हम एप्लीकेशन इनिशिएट हबो आंसर बी हबो रजना बुझी पारला ना नहीं बुझी पारला ना नहीं नहीं ना ए जे कंफ्यूज अरे डीएनए पॉलीमरेज ता होची हमर केवल एम्प्लीफिकेशन करेबा पई बोली से इनिशिएट करिया उपचारची बा को रीजन रे हमर डीएनए एम्प्लीफिकेशन हबो सेडा पीसीआर रे को फैक्टर ता डिसाइड करची सेडा हमर प्राइमर डिसाइड करची ओआरआई थांदा बोली कहले ओआरआई लिखि थांतो बुझी बुझी पारला ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन थांदा बोली कहले ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन लिखि थांतो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन रे हमर जाय जते बेले हमर जायगिरी प्राइमर टा ऐड होची सेडो हमर डीएनटीपीस ऐड हे तापर डीएनए पॉलीमरेज एक्शन करके एक्सटेंशन करची हैला एक्सटेंशन करची ठीक चलो नेक्स्ट 40 the efficiency of the bacterial transformation is generally expressed as number of colonies formed per gram of agar number of transformant per microgram of dna number of plasmids synthesized per cell cycle percentage of the dna digested by the restriction enzyme माने the efficiency of the bacterial transformation is generally expressed as हमें कहला आंसर प्राइमरी यस मैम टाटा बॉक्स में मोस्टली को नाइट्रोजनस बेस थाए टीए थाए थाइमिन एडेनिन टाटा बॉक्स है ना प्रोकैरियोटिक केस रे ताको प्रिनबाउ बॉक्स बोली कहा जाए प्रिनबाउ बॉक्स फटी कौन हम ऑप्शन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन रे बैक्टीरिया रे हमर केते ट्रांसफॉर्मेशन हैला सेरा हमर केमिति जनरली हमर एक्सप्रेशन होची कॉलोनीज कथा किछि कुआ जायनी प्लाज्मिड कथा किछि कुआ जायनी डीएनए डाइजेशन कथा किछि ना ट्रांसफॉर्मेशन पर माइक्रोग्राम ऑफ द डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन रे ट्रांसफॉर्मेंट पर द माइक्रोग्राम ऑफ द डीएनए नेक्स्ट which instrument is primarily used to sterilize the culture media before use in the biotechnology laboratories laminar airflow cabinet incubator autoclave centrifuge which instrument is primarily used to sterilize the culture media before use in the biotechnology laboratories आमे जे कोनोसी जिंस यूज करिया पूर्वरु लैबोरेटरी रे आमे स्टेरिलाइज करू हैला प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुए तो से स्टेरिलाइजेशन ना हमर कोडी हबो को मशीन रे स्टेरिलाइजेशन हबो को मशीन रे स्टेरिलाइजेशन हबो 41 ऑप्शन डी अरे ना सेंट्रीफ्यूज रे हमर घुरेई की बुलेबा होई थाए हैला घुरेई की बुलेबो आ जोडा हमर हेवी मटेरियल उडा का तळे सेटल डाउन होई छिबा आ सब लाइट मटेरियल उडा सब ऊपर हमर सुपरनेटेंट बडा रहै हैला तो हमर एरा ऑटोक्लेव हबो ऑटोक्लेव रे हमर जे कोनसी लैबोरेटरी रे हम जे कोनसी मशीन यूज करछि जे कोनसी मटेरियल यूज करछे ताको प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन दरकार से स्टेरिलाइजेशन ना हमर पूरा हाई डिग्री सेल्सियस रे होछि केते रे हो जानछो 121 डिग्री सेल्सियस रे हुए 121 डिग्री सेल्सियस रे हुए से सेल्सियस रे हमर ऑटोक्लेव मशीन लगे ये सब स्टेरिलाइजेशन हो तापर जे लैबोरेटरी रे सब एक्सपेरिमेंट्स होता तो हबो सी हबो आंसर हैला इंक्यूबेटर रे छुआ उडा रहंदे रे डी नहे इंक्यूबेटर रे बहुत मिनिमल टेंपरेचर है हैला हमें बढ़ाई परिबा टेंपरेचर बाकी एते बढ़िबोनी इंक्यूबेटर ठीक in recombinant DNA technology the host cell should preferably possess which characteristics host cell preferably को characteristic possess करिया दरकार high pathogenicity slow growth rate ability to maintain the recombinant DNA stably lack of the metabolic activity आपर को चैप्टर क्लास नेबे को चैप्टर क्लास नेबे तमे को ह्यूमन फिजियोलॉजी करिबा पूरा हैला ऑटोक्लेव रे कोन हो होची बा सोप्स ओनली फॉर स्टडी सुनो तमरो आमे जते बेले हमरो एगुड आमे जते बेले लैबोरेटरी रे कोनोसी भी एक्सपेरिमेंट करूचे
हैला मानकर मु पीसीआर मशीन रे चलेबी कि अन्य कोनोसी गोटे मशीन रे चलेबी ता पूर्वरु आमे सेटा को स्टेरिलाइज करूचे ता पूर्वरु आमे से जिंसटा को पूरा स्टेरिलाइज करिके माने से भितर जे कोनोसी बैक्टीरिया भाइरस जहा थिबो सेटा तो पुनी सफा करबा ना नहीं आमे जते बेले गोटे घरे हैला घरे जते बेले आमे सेटा को किछि गोटे माने मानकर कोडे पैन रे चा बनेबा को गले हैला चा बने चा बनेचे ठीक अछि सेटा हमर असना हे जाइछ हैला गंधिया हे जाइछ से गंधिया इला परे आमे कोन करछे ताको फर्स्ट आमे बासन माजिली पूरा सफा करछे तापर पुडी गरम पानी रे पके देले कोन होछि स्टेरिलाइज होछि ना नहीं हैला जे कोन से बैक्टीरियल ग्रोथ ग्रोथ वगैरह थिबो जहा थिबो से सब नष्ट होई जिवो ठीक अछि तो लैबोरेटरी कंडीशंस रे हमर बहुत हाई डिग्री ऑफ टेंपरेचर रे आमे जिंसटा करछे हैला हाई डिग्री टेंपरेचर रे जिंसटा करछे ताहले जाय कि आमे कोन करि परिबा ना करि माने एक्सपेरिमेंट करि परिबा नले अन्य जो बैक्टीरिया उडा थिबो सेठी तार कंटामिनेशन हे जिवो आ तम रिजल्ट भलो आसीबो हैला एडा ऑटोक्लेव रे होछि ठीक अछि ह्यूमन फिजियोलॉजी करिबा नेक्स्ट क्लास ठीक अछि काली मॉर्निंग रे करिबा क्लास हैला काली मॉर्निंग रे करिबा एडा कोन बा आंसर सी एबिलिटी टू मेंटेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टेबिलिटी ठीक अछि एटा तो बुझी पालो कि असुविधा नहीं हैला रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल प्रेफरेबली कोन कैरेक्टर प्रोसेस करिया कथा रिकॉम्बिनेशन से भल से करिया कथा हैला रिकॉम्बिनेशन भल से करिया कथा अरे पैथोजेनिसिटी काई हबो पैथोजेनिसिटी काई हबो पैथोजेनिसिटी माने कोन इन्फेक्शन कॉज करिबा एबिलिटी पैथोजेनिसिटी रो माने हैला इन्फेक्शन कॉज करिबा एबिलिटी आमे चाहू कि हमर होस्ट सेल रे इन्फेक्शन कॉज करू काई इन्फेक्शन कॉज करिवो बुझि पाइलो सी रिकॉम्बिनेशन भल से करिया दरकार रिकॉम्बिनेशन भल से करिवा दरकार चलो which of the following is an example of a cloning vector commonly used in bacteria lambda phage dna only ti plasmid tbr 322 yeast artificial chromosome ना ना हाई पैथोजेनिसिटी हबनी हैप्पी commonly used cloning vector bacteria रे हाँ तन्मय एडा एग्जाम पूर्व इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशंस उडा कहीं सी सी अच्छा सी टीबीआर 322 ना आर फुल फॉर्म ला के कहबो फुल फॉर्म ला के कहबो जल्दी पी रो माने हैला प्लाज्मिड बी रो माने हैला बॉलीवर और आर रो माने हैला रॉड्रिगेज ठीक अछि 43C 44 what is the primary role of the fermenter jacket used in surrounding a bioreactor हाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट करबा ठीक अछि गोटे ह्यूमन फिजियोलॉजी कर दब तापर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा ओवरऑल पूरा होल बायोलॉजी है ना हां देखो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द fermenter jacket surrounding a bioreactor fermenter रो कोन काम तो p/q कथा कहछ हां हो ठीक अछि p/q गोटे नै जिबा तमे गोटे के दीटा नै जिबा ठीक अछि हां बइडा fermenter कोन पय दरकार to maintain the desired temperature during the fermentation. Very good. Next. Jaldi jaldi speed up kariba chalo. 100 टा question अच्छी अछि. The major advantage of PCR over the conventional cloning method is that PCR requires living cell for the DNA amplification, amplifies specific DNA sequences rapidly without the cloning, produces recombinant proteins directly, does not require primers. पीसीआर हमर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड रे मध्ये बैक्टीरिया हमर क्लोनिंग करी के हमर नंबर बढ़े पारी ठीक अछि ना नॉर्मल मेथड रे नॉर्मल रिप्रोडक्शन करी काहे हम पीसीआर करछे कोन चूल मचिला हमको पीसीआर करबा पई बोली हां कोन चूल मचिला कोन अब शिखा शर्मिला आशुतोष सुजाता बनी बी बी ओके हमर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई कर दछ क्लोनिंग न करी हैला क्लोनिंग न करी दरकार बनी एडा नेक्स्ट The DNA fragments separated by agarose gel electrophoresis are commonly visualized under the UV light after staining with the bromophenol blue, sodium chloride, ethidium bromide, calcium chloride. B B एडा कोन बई रे
46 46 सी शर्मिला इथिडियम ब्रोमाइड है इथिडियम ब्रोमाइड मते खाली नुई इथिडियम ब्रोमाइड सागरे यूवी लाइट मते पके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 a high copy number plasmid is generally preferred because produces many copies of the recombinant DNA within each cell eliminates the antibiotic selection prevents transformation stops the bacterial cell division see how very good एडा कहलो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड रे काहे दरकार सो दैट से बहुत गुडा कॉपी नंबर एका संगे से करि परिबो हैला एका संगे बहुत गुडा कॉपी से बनै परिबो सेहि में दरकार सिंपल 48 which parameter should be carefully monitored in an industrial bioreactor to prevent oxygen limitation which parameter should be carefully monitored in an industrial bioreactor to prevent oxygen limitation agar concentration gel pore size dissolved oxygen level DNA fragment size बायोरिएक्टर हमें कौन देखिया दरकार ऑक्सीजन लिमिटेशन को प्रिवेंट करिया पई बोली बीओडी लेवल देखिया दरकार तो रिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल हां ऑक्सीजन डिमांड को देखिया दरकार ना नहीं तो आंसर विल बी कोन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ठीक अछि एटा भी बड़ ऑप्शन थिला अच्छा हो आंसर हला सी ठीक अछि तम भाग्य रे एमिति बड़ ऑप्शन उडा को ठीक हे जाऊ बोली पढु हला ना तो पढु देखो following restriction digestion successful ligation is most dependent upon compatibility of the DNA and generated by the restriction enzyme length of the RNA primer concentration of the external number of bacterial colony formed bacterial colony केते कम होची doesn't matter हला माने से 50 कोन restriction digestion हला पर successful ligation में कहा ऊपर डिपेंड करची हमर sticky end रो प्रोडक्शन ऊपर डिपेंड करची ठीक अछि sticky end जदी प्रोड्यूस हला ताले हमर भलो ligation हो हैला ताले भलो लाइगेशन हबो ता माने कंपैटिबिलिटी ऑफ द डीएनए एंड जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रकार एंड द्वारा हमर कंपैटिबिलिटी भलो हबो स्टिकी एंड्स द्वारा ठीक अछि आंसर विल बी ए ठीक अछि विश्व 50 which sequence event correctly represents the recombinant DNA technology करो sticky ends एरा करलो क्वेश्चन नंबर 50 सी आशुतोष हाँ एमपीएस गेम रोप सी दिव्या सुश्री आयुष है ना आगो रेस्ट्रिक्शन एंड डाइजेशन करलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करी डाइजेस्ट करला पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस होला पर लाइगेशन होला पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होला पर सी जाय के ट्रांसफॉर्मेशन होला पर सिलेक्शन होची हमर रिकॉम्बिनेंट्स रा हैला सिलेक्शन होची रिकॉम्बिनेंट्स रा जोटा कि हमर कोन सिलेक्टेबल मार्कर्स द्वारा हमर जाना पड़ो सी very good C 51 the first commercially produced recombinant human therapeutic protein approved for widespread use was ligase हाँ first commercially produced recombinant therapeutic protein दा कौन ठीक कह दिला संपूर्ण कौन आयुष्मान क्लोनिंग वेक्टर एक्सपेरिमेंट यूज करी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू व्हाइट कॉलोनी सेडा बा एथड़ को चारि फोर हम डिस्कस कर सारलेनी हो आउतरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसले आउतरे कहि देबी हैला ठीक अछि क्यूमुलिन के डिस्कवर करथिला एली लिली कंपनी अमेरिकन कंपनी दा in the year 1983 ठीक है humulin very good the recombinant DNA technology used to produce humulin eliminated the need for the insulin obtained from humulin once produce ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠୁ insulin produce କଲେନି
कोठो इंसुलिन प्रोड्यूस कर लेनी हमें एली लिली 1983 यस ए सी कौन सी तो ठीक अच्छे विदुस्मिता पिग एंड कैटल पैनक्रियास पिग्स आउ कैटल्स आउ हमर काउज रो हमें डिराइव करथिले बट इट कॉज सिवियर एलर्जीज इन द ह्यूमंस सिवियर एलर्जी कॉज कला तो सेडा तो मीट कमी गला हमको हम दरकार नहीं समान तो डिराइव परिवार 53 in RNA interference gene silencing is primarily brought about by DNA methylation of the promoter region degradation of the complementary mRNA molecules inactivation of the DNA polymerase blocking the translation by the ribosomes only blocking the ribosomes by the translation only pigs and cattle yes हाँ RNA interference हाँ मैम ऑप्शन डी देखिबी कौन हिची blocking translation by the ribosomes only कौन हला ऑप्शन डी ना प्रीवियस ऑप्शन डी को चली हैं प्रीवियस ऑप्शन डी कौन हिची फिश पैनक्रियास ओ हला कोन तांकर भी तो इंसुलिन से मानको पैनक्रियास माने कोन तम पैनक्रियास से मानको पैनक्रियास नहीं कुछ भी हसुजो हां कोन बेडा डिग्रेडेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरी एमआरएनए मॉलिक्यूल्स तो हम यूकैरियोटिक सेल्स रे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज एक्सेप्टेबल है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज एक्सेप्टेबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए इज एक्सेप्टेबल जदि मोर एमआरएनए रे डबल स्ट्रैंडेड हे गला ना ताहले मोर बॉडी रे किछिटा स्पेसिफिक प्रोटीन्स अछि जोडा की सी जाईगिरी क्लीव कर दबा आरएनए रे सीक्वेंसेस को पूरा पूरी क्लीव कर दबा जोडा को की हमर कोन कुआ जाउची डाइसर प्रोटीन बोले कुआ जाउची सिमिलरली सेही जिंस करिगी हमें कोन करछे ना एमआरएनए रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस पकेगिरी ता बॉडी में से टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग आरएनए टा क्लीव करे दोचे जो टॉक्सिन टा की हमरो टोबैको प्लांट रे रूट नॉट डिजीज कॉज करोतला हैला टोबैको प्लांट रे रूट नॉट डिजीज कॉज करो ठीक अछि हां आसा क्वेश्चन नंबर 54 अरे इमे ऑब्वियस ऑप्शंस उडा को रहिले तो बढिया मजा लागिवो नहीं चलो द नेमाटोड responsible the nematode responsible for the root disease in tobacco plant controlled through the RNA interference is ये काहेंगे जे एमती सब स्टार पकेची हैं पूरा एमती स्टार हे गई छे एडा सब करो कोन हम नेमाटोड आयुष्मान बी मेलोडी गाइन इनकॉग्निशिया जोड़ा की कोन हमर प्रोफाइलम को बिलोंग करची एस्केलमेंथिस नेमाटोड सब माने एस्केलमेंथिस next double stranded RNA introduced into the plant cell during the RNA interference results in increased transcription of the target genes silencing of the genes with complementary nucleotide sequences enhanced protein translation random DNA mutations शिखा तन्मय कौन हम मानसी सुजाता एडर कौन हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में लिखेगी नंबर लिखेगी कुआ नंबर लिखेगी आंसर करो बी एमआरएनए रे हमर डीएनए जहा फॉर्म हबो है ना डीएनए जहा फॉर्म हबो तार स्पेसिफिक हमर एमआरएनए जो जदी फॉर्म हमर कॉम्प्लीमेंटरी एमआरएनए रो मते डबल स्ट्रैंडेड हे जाउची बोली कहले सेटा ही हमर आरएनए इंटरफेरेंस हमर ये करछ ठीक अछि silencing of the genes with the complementary nucleotide sequences 56 bt cotton exhibit resistance mainly against whitefly infestation bollworm larvae aphids root knot nematodes bt cotton exhibits resistance mainly against 54 54 आउट रे 54 रे कोन अछि अरे 54 टा एटा डायरेक्ट क्वेश्चन डारे नेमाटोड टा की टोबैको प्लांट रे रूट नॉट डिजीज कॉज करथुला से नेमाटोड जदी कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए सीक्वेंस टा को हमें कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए रोडा इंट्रोड्यूस कर दबा ताले हमरो कोन हबो आरएनए रो डाइसर प्रोटीन रो हेल्प रे आरएनए डा हमरो आ एक्सप्रेशन करि परिबनी से प्रोटीन डा ही फॉर्म हबनी जो प्रोटीन टा की रूट नॉट डिजीज कॉज करथुला हैला तो एडा होचे हमरो गोटे कोन
गोटे डिफेन्स मेकानिज्म आमे बायोटेक्नोलॉजी रे आमे गोटे डिफेंड करिया पई बोली रूट नॉट डिजीज को आमे प्रिवेंट करिया पई बोली आमे एटा यूज बीटी कॉटन exhibit resistance mainly against white fly infestation, bollworm larvae, aphids, root knot nematode. कौन होबो 55 B Mansi bollworm larvae. Very good. 57 the insecticidal cryprotein in the BT crop are naturally produced by Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Rhizobium leguminosarum, Escherichia coli. Escherichia coli. कौन होबो ऑप्शन नंबर बीटी क्रॉप हमर नेचुरली कोड प्रोड्यूस करछे बीटी Bacillus thuringiensis टू नहीं हां आसीबो सेडो आयुष्मान आगु अछि नेक्स्ट cryprotein become toxic to susceptible insects primarily because they are activated in the alkaline gut of the insect. They are activated by the acidic condition in the stomach. They directly inhibit the DNA replication. They destroy the chloroplasts. कौन होबो ट्राइप्रोटीन हमरो टॉक्सिक आउ इंसेक्ट मानको पई बोली जनरली हमरो टॉक्सिक थांती हला काहेंगी टॉक्सिक हे जांदी 58 दिव्या विदुस्मिता मानसी इतिश्री they are activated in the alkaline gut of the insect आउ alkaline gut रे क्राइप्रोटीन उडा एक्टिवेट हेगी से gut रे सी कोन करछंदी परफोरेशन कॉज करै दोचंदी जा द्वारा कि सेमाने कोन होची जहा खाउचंदी सेडा सब लीक हे जाय हला जहा खाउचंदी सेडा सब लीक हे जाउची हला एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेमाने को स्टार्वेशन द्वारा डेथ हे जाय हला स्टार्वेशन द्वारा डेथ हे जाय क्वेश्चन नंबर 59 which cry gene is specifically effective against the cotton bollworms आइला ना आसिला बे रीनीट रो क्वेश्चन थिला अच्छा अच्छा अरे मुही पकई थिली जानना तमे रीनीट रो क्वेश्चन मुही पकई थिली यस बी ए ए हाँ क्राई 1 ए बी देखिए बा क्राई 1 ए सी एंड क्राई 2 ए बी एडा होची फॉर कॉटन बॉलवर्म्स हैला और क्राई 1 ए बी होची फॉर कॉर्न बोरर्स ठीक अछि क्राई 1 ए बी फॉर कॉर्न बोरर्स हेला ऑप्शन Next, 60. One important feature of an ideal genetically modified crop is increased susceptibility to the pest, reduced nutritional value, high yield with improved stress tolerance, requirement of the greater pesticide application. Pranam, Prakash. One feature of an ideal genetically modified crop. One important feature. रजना तृप्तिमयी हरप्रिया आयुष्मान यस हमरा मेजर कौन रहिया दरकार फीचर हाई यील्ड विथ इंप्रूव्ड स्ट्रेस टॉलरेंस हाई यील्ड भी दउथबो और स्ट्रेस टॉलरेंस मध्ये से हमरा बढ़ोथबो हैला 59 आंसर 59 बा करिले हमें करले नि कि ए हबो बा ए हबो अरे अरे हां हां कॉटन बॉलवर्म्स को तो पचारची कौन बोरर्स तो हबो क्राई 1 ए बी ए देखो भूल कर देची कॉटन बॉलवर्म्स पई है ना क्राई 1 ए सी डाइला ए डाइला ठीक अछि थैंक यू यस 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 मैं लिखी जी ठीक आंसर मारिला बेले को भूल मार दीची थैंक यू होता है मु अरे नहीं नहीं मु जान के एमिति करती तमे अटेंटिव अछि ना नहीं देखिया तमे अटेंटिव अछि ना नहीं देखिबा मैं एटा जान के करती देखला बस ट्रिक थिला एटा नेक्स्ट transgenic animals are primarily developed to
Transgenic animals are primarily developed to eliminate all naturally occurring mutations, study the gene function in human diseases, replace all experimental cell cultures, prevent meiosis. ତମେ କହିଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଥିଲ ଆଚ୍ଛା ହଁ ମତେ ବସ୍ ବସ୍ ମୁଁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଅଛ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିକି କରିଥିଲି ହେଲା बी केयरफुल आगू को भी करी पारे है ना आगू को भी हे पारे कभी भी कुछ भी हो सकता है 61 61 बी ट्रांसजेनिक एनिमल हमें कहीं डेवलप करो जीन फंक्शन को ह्यूमन डिजीजेस को स्टडी करो वेरी गुड 62 रोजी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस मिल्क दैट वाज पड़ी जाइतांदी रे बे पड़ी जाइतांदी हां 61 62 of what 62 है न्यूट्रिशनली एनरिच्ड मिल्क फॉर द ह्यूमन इन्फेंट्स कितने ग्राम रे था 2.4 ग्राम पर लीटर है ना 2.4 ग्राम पर लीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 which transgenic animal has been widely used for as a model for studying the cystic fibrosis and cancer rabbit mouse goat sheep cystic fibrosis कैंसर एडा ट्रीट करिया पे बिना में कोन तमे धरि दै थांदो तमे आइला अडको मो सॉरी जाई थांदी बुझिलो मो सॉरी जाई थांदी 2.4 ग्राम पर लीटर यस आशुतोष ट्रांसजेनिक एनिमल वाइडली यूज्ड एज ए मॉडल जनरली हमर माउस ही यूज होजी हला से मुसाटा ही बड़ी पड़छ माउस नेक्स्ट which application of transgenic animal help evaluate vaccine safety before the human use biopiracy study molecular farming vaccine safety testing hybrid seed production which application of the transgenic animal help evaluate the vaccine safety before the human use vaccine safety testing नहीं vaccine safety testing ही तो करा जाउची ना सी हम दिव्या vaccine safety testing next the therapeutic protein alpha 1 antitrypsin is mainly required for treating hemophilia emphysema diabetes mellitus thalassemia yes 65 alpha 1 antitrypsin कौन ପାଇଁ ଦରକାର କାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଆମର ଏମ୍ଫାଇଜେମାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଏମ୍ଫାଇଜେମାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋଟିନ ଗୋଟେ ଡିରାଇଭ୍ କରିକି ହ୍ୟୁମାନ alpha 1 antitrypsin ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛେ ସେମିତି ଆମର ସିମିଲାର ଆଇଟम cystic fibrosis କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଣାମ ସଭିମାନ next 66 a deficiency of alpha 1 antitrypsin primarily affects the liver only kidneys lungs leading to the destruction of the alveolar tissue pancreas alpha 1 antitrypsin देगी जदि हम एम्फाइजेमा को ट्रीट करछे ता माने alpha 1 antitrypsin रे जते डेफिशिएंसी हो ताले हमर लंग्स ऊपर नियत फरक पकोची हैला लंग्स ऊपर फरक पकोची तो एडा हमर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो हैला एडा हमर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आज 100 क्वेश्चन गेमिंग चिन्हू आउरी अछि नेक्स्ट जल्दी सारे दबा बा सर जिवो एबे फटाफट सर जिवो चलो The principal advantage of the recombinant humulin over the animal-derived insulin is that it is chemically different from human insulin, produces fewer allergic reactions, requires no purification, is synthesized without the bacterial cells. Pranam, sorry man. B. It produces fewer allergic reactions. नॉले तो हमें गाय घुसुरी छेली मेंढा एमानको पैनक्रियास रे मते डिराइव करके इंसुलिन नहीं जाउथिले किंतु हमें रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन करिया कारण कोन थिला एलर्जिक रिएक्शंस कम होबो हैला एलर्जिक रिएक्शंस कम होची which microorganism is commonly used for the recombinant production of the human insulin Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli Rhizobium only Rhizomonas Azotobacter कोन हबो which microorganism is commonly used for the recombinant production of the human insulin recombinant production of the human insulin 67 B 68 को 68
ए ए अच्छा हो Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli है Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli very good next question answer 69 the major objective of the molecular diagnosis using DNA probe is to detect disease before the symptom become evident increase the antibiotic production improve seed germination enhance the fermentation molecular diagnosis रे आमे आमे जो डीएनए प्रोब यूज करछे कोनटा यूज करछे डिजीज को डिटेक्ट करिया पई बोली हैला आ मोलिकुलर डायग्नोसिस रे हमरा आउ कोन को मेथड अछि पीसीआर मेथड अछि एलाइजा मेथड अछि हैला ए मेथड सुडा को भी तो अछि ए मेथड सुडा को भी तो अछि हैला आ एलाइजा मेथड हमर कोन पई दरकार इट इज द confirmatory test for AIDS हैला इट इज अ confirmatory test for AIDS ठीक अछि हां नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए is the correct answer 70 gene therapy aims to replace or correct the defective genes responsible for the disease increase chromosome number produce recombinant proteins only destroy all the mutated genes SC category 472 माने मे बी यस हैला मे बी यस तो तमे टिके लास्ट सिलेक्शन जाने वेट करबो हैला ए वेट करबो चांस अछि हां ए replace or correct the defective gene responsible for the disease gene therapy first केते बडे हेतिला 1990 रे उते 4 year old girl रे हैला कोन दिला ताको प्रॉब्लम एडीए डेफिशिएंसी थिला एडीए रो माने कोन एडीए होची कोटे एंजाइम दा एडिनोसाइन डीएमिनेज अब ये कोन करूची ये हमरो मैच्योरेशन करतला टी लिम्फोसाइट्स इट वाज हेल्पिंग इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स ठीक अछि तो एडार डेफिशिएंसी हे गला बनी करे टी लिम्फोसाइट्स रो भी मैच्योरेशन हबनी टी लिम्फोसाइट्स रो मैच्योरेशन न होला बोली कहले हमरा कोन इम्यूनिटी मते प्रोवाइड हबो ठीक अछि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड हबनी तो हमें रिप्लेस कर दबा करेक्ट जीन्स को पुट कर दबा ताहले हमरो जीन थेरेपी हे जे which of the following is not considered as an advantage of the genetically modified crop advantage नुहे reduce dependency on the chemical pesticide एटा तो हमरो गोटे एडवांटेज ही increased enhanced nutritional value advantage increased post harvest losses intentionally post harvest losses को हमें intentionally थोड़ी करबा है ना intentionally थोड़ी करबा improve tolerance to abiotic stresses option number C is very correct answer C is the correct answer हां हां जन्म हेबा पूर्व सेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रे ठीक करेबो नेक्स्ट 72 bt toxin genes are isolated from virus fungus bacterium alga virus fungus bacterium algae जल्दी 72 रजना 71 सी हां 72 सी आशुतोष को बैक्टीरिया कहलो बीटी बैसिलस thuringiensis ठीक अछि yes the golden rice variety was developed primarily to overcome the deficiency of vitamin C iron vitamin A vitamin D golden rice variety was developed primarily to overcome the deficiency of ठीक अछि 73 कोन हो ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड विटामिन ए रो
विटामिन ए रो डेफिशिएंसी को ओवरकम करिया पई बोली गोल्डन राइस हमर यूज होतला विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम कोन इट इज रेटिनॉल और विटामिन ए रो डेफिशिएंसी रो कोन हे परिबो नाइट ब्लाइंडनेस जेरोथैल्मिया हैला ए सब जिंस हमर कॉज करे परिबो कि विटामिन ए रो डेफिशिएंसी विटामिन ए रो डेफिशिएंसी रे हमको ए सब डिसऑर्डर्स हे परिबो आउ हमर जो विटामिन ए आसुची विटामिन ए रा हमें कोड डिराइव करबा ना बीटा कैरोटीन जीन रु हमें एडा को डिराइव करछे डैफोडिल प्लांट रु हैला डैफोडिल प्लांट रु हाँ नाइट ब्लाइंडनेस भी होएबा बीटा कैरोटीन जीन सनातन वेरी गुड नेक्स्ट 74 one ethical concern associated with the transgenic animal is increased DNA replication rate animal welfare issues during the experimentation reduced protein synthesis inability to undergo meiosis one ethical concern associated with transgenic animals B 74B animal welfare issue during the experimentation है ना हमरो मेजर एथिकल कंसर्न कोन रोजी जान अच्छा को ऑर्गेनाइजेशन ना हमरो एडा को माने कंट्रोल करछि कहलो एथिकल वैल्यू मोरल वैल्यू सेंटिमेंटल वैल्यू जेमेदी कार किछि जेमेदी हमरो माने अफेक्ट न पकाओ है ना कि हमरो कंट्रोल करछि कहलो से ऑर्गेनाइजेशन ना आ माने कोन कहलो माने जेमेदी हमें गध आ गोटे का से घोड़ा को मिसई गोटे बनै नथिले म्यूल गोटे बनै नथिले म्यूल गोटे बनै नथिले है ना सिमिति आमे तमे कहबो कि काल सकाळ को मैम मो तो बायोटेक्नोलॉजी करके कुकुर और बिल्ली की मिसई रे आउडे गोटे गोटे मोडे नुवा ऑर्गेनिज्म रे मोडे डिस्कवर करिवे हला कि काली कहबो तमे कि मो गोटे माने कोन गोटे सापडे और बेंगो को मिसई गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म रे करबी तो ए जिंसटा तमरो एथिकल वैल्यू हमको फरक पकेबो है नै एथिकल वैल्यू को हमरो इमोशनल वैल्यू को सेंटिमेंटल वैल्यू को सोशल वैल्यू को मेजरली फरक पकेबो ना नै हला तो सेइडा को हमर जेमिति तमे जगी के रखिबो सेति पे बोली एनिमल वेलफेयर वाला अछि नले किछि भरोसा नै ए गोट दिन उठिबो आसीबो आशुतोष आसीबो कि मैम मु त जी कुकुर बिलाई को मिसई गोटे बनेबी देखिबा केंदी बनुचंदी हला बस हां हां काली काली आनिबाटा सनातन ठीक अछि विश्व कहबा काली कि मैम मु त जिबी गोटे हमर से जो गोटे घुसुरीडे आनिबी आ गोटे कधडे आनिबी मिसई रे तांके दिरा को हमको गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म दे बनेबी हला बस सरीगला कथा एमिति एमिति ही चलती हम बायोटेक्नोलॉजी एमिति तुम पूरा इकोसिस्टम को पूरा पूरा हिला देगा ए टाइप रो कर दबो तुम ठीक अछि तो सेति में बोली ताको जगी के रखिया पई बोली जीईएससी अछि वेरी गुड एवरीवन जीईएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी नन ट्राई करिबो ना मु जानि छी जे कोन ओडे भूत पसिबो है मानकर मु जानि छी बा which property is most desirable in a ideal crop variety high fertilizer requirement low harvest index resistance to disease and pest reduced seed viability से कोन चार्टर हाइब्रिड करिवो कहलानी बिल्ले या मुसा भगवान फिश और ह्यूमन सही 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 पई बोली तम पई बोली ही जगी जब से टॉम एंड जेरी को करिवो कहलानी हां ठीक है 75 कोन हम 75 वाला सी रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट एडा होची गोटे हमर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हाई फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इज नॉट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हार्वेस्ट इंडेक्स हमर हाई हेबा दरकार लो हार्वेस्ट इंडेक्स थोड़ी हमें चाहू गोटे क्रॉप रे वायबिलिटी ऑफ सीड हमर इंक्रीज हेबा दरकार रिड्यूस सीड वायबिलिटी हला तो बहुत अल्प दिन रे सीड ता नष्ट होई जु हैला अल्प दिन रे सीड ता नष्ट होई जु नेक्स्ट The RNA interference is highly specific because it acts only on proteins. It targets the mRNA having the complementary nucleotide sequences. It destroys the all cellular RNA. It permanently removes the chromosomes. It permanently removes the chromosomes. RNA interference.
B, it targets the mRNA having the complementary nucleotide sequences है ना RNA रहिला तार complementary nucleotide जदि हमर attach हे गला जाईगिरी ताले हमर double stranded RNA is not acceptable in a eukaryotic cell ठीक अछि तो एडी मोर कोन हो ना डाइस्टर प्रोटीन ऐड करी गिरी तार खंड खंड विखंड हमर siRNA फॉर्म कर दबो जो siRNA फॉर्म होची सेडा को जाउची small interfering RNA हैला तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जोड़ा को सब होची सेडा हमर इफेक्टिवली हमर प्रोटीन रो सिंथेसिस करे परिबनी हैला आरएनए इंटरफेरेंस को सही तरह बोले हमर जीन साइलेंसिंग बोले मते कहै which of the following best explains why bt crop reduce pesticide usage why bt crop reduce pesticide usage bt crop हैला जोटा कि हमर बीटी टॉक्सिन द्वारा बा बीटी हमर जो जीन द्वारा हम इनकॉर्पोरेट करे जे करिचे हैला सेडा को हम कंबाइन करछे सो दैट हमर बीटी टॉक्सिन kills the susceptible insect larvae internally after the ingestion bt crop repels the insects through the smell है bt toxin sterilizes soil microbes नहीं sterilize करले तो भलो bt crop synthesize the chemical pesticides ना है ना असला हमर ऑप्शन ए है ना ऑप्शन ए बीटी टॉक्सिन कौन करछि इंसेक्ट लार्वा को किल कर दोजे केमिति किल कर दोजे अल्कलाइन पीएच रे तार मिडकट रे अल्कलाइन पीएच रे जाके परफोरेशन कॉज करेगी एटा कर नेक्स्ट which characteristic of humulin made it a major breakthrough in diabetes management it contains bovine amino acid sequence it is identical to naturally occurring human insulin it permanently cures the diabetes it eliminates the need for glucose monitoring कौन अब अच्छा मतलब कहले जो प्रो इंसुलिन और एक्टिव इंसुलिन रे बा फंक्शनल इंसुलिन रे हमर डिफरेंस टा कोन प्रो इंसुलिन और फंक्शनल इंसुलिन रे हमर प्रो इंसुलिन रे ए अछि और एडी सी बी पेप्टाइड बॉन्ड अछि और एडी सी चेन डा अछि ठीक अछि और एक्टिव इंसुलिन हेले हमर फ्री हमर सी पेप्टाइड टा रिमूव हो जाउ सी पेप्टाइड टा रिमूव हो जाउ ता द्वारा हमर खाली ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड रे हमर एमिति अटैच ठीक अछि और बी चेन सी चेन ना रिमूव हो जाउ ना ठीक अछि तो एडा हमर ह्यूमलिन रो कैरेक्टरिस्टिक कोन डायबिटीज मैनेजमेंट करिबार ये काहेकि हमर एक्टिव ही पल्ला गोटे तो हमर ये स्लॉटर करिया को हमर कोन स्लॉटर करेबा को देलानी ठीक अछि पिग्स कैटल्स एवडा स्लॉटर न करेगिरी हमें डिराइव करि पाले इंसुलिन आ हमें डायबिटीज को मैनेज करि पाले एलर्जी रिएक्शन को हमें प्रिवेंट करि पाले also it is identical to the naturally occurring human insulin next 79 the first successful clinical gene therapy was performed for a child suffering from beta thalassemia severe combined immunodeficiency skid due to ADA deficiency hemophilia A sickle cell anemia first successful gene therapy जोड़ा कि हम डिस्कशन करि साचे अशांति डेसल्विया को फर्स्ट करा हेतिला 1990 रे 4-year-old girl को हला ताको कोन हेतिला severe combined immunodeficiency बा skid disease हेतिला ADA deficiency में ADA combined दरकार maturation of T lymphocytes kind of maturation of T lymphocytes kind of B yes 80 which combination correctly matches the application with its biotechnological product emphysema triprotein diabetes mellitus recombinant human insulin bollworm resistance alpha 1 antitrypsin RNA interference human growth hormone 80 एटीडा कोन हबो बी हबो दिव्या हिरण्यमयी मानसी हां विश्व हैप्पी विजयलक्ष्मी डायबिटीज मेलिटस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन एम्फाइजमा में हला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हला बॉलवर्म रेजिस्टेंस पई बोली हमर हला कोन बीटी टॉक्सिन बीटी ये हला एडा होचे एम्फाइजमा में और आरएनए इंटरफेरेंस को हम जो टोबैको प्लांट रे रूट नॉट डिजीज को प्रिवेंट करिया पई बोली मेलोडी का इनकॉग्निशिया रे हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं
है ना ठीक है 81 which molecular change is responsible for the sickle cell anemia सब diseases क्वेश्चन आसी गला पिले अबे है ना सब diseases क्वेश्चन सुडाबो करो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लास्ट 20 क्वेश्चन डिजीजेस ऊपर अछि है ना ट्राई टू एबी बा कॉटन बॉलवर्म्स जो मैंने सेशन को लाइक करना जल्दी सेशन को लाइक करो सेशन लाइक कर दियो ए ए yes substitution of the glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin chain hemoglobin रो beta globin chain रो sixth position रे glutamic acid जगह रे valine नाम रो जेतोले replace ही जाउची सेते बेले मोरो biconcave shape of the rbc becomes sickle shape जा द्वारा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमी जाउची हाइपोक्सिया कंडीशन देखा जाउची also हमरो इंटरनल क्लॉटिंग मध्ये हमरो एज सिम्पटम देखा जाउची कोडन कथा जदी कहबा ग्लूटामिक एसिड रो कोडन होची GAG और वैलिन रो कोडन होची GUG है ना ए नेक्स्ट 82 individual with beta thalassemia primarily exhibit reduced synthesis of देखो thalassemia होची मध्ये हमर गोटे प्रकार autosomal recessive disorder हला जोडा रेगी हमर एडा गोटे हमर क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर था अल्फा थैलेसेमिया गोटे प्रकार अछि अल्फा थैलेसेमिया जोडा कि हमर अल्फा चेन रे म्यूटेशन हेगिरी अल्फा चेन रे किछि म्यूटेशन हेगी अल्फा चेन रो सिंथेसिस ता हमर कमी जाउछ आ बीटा थैलेसेमिया केते बेले हबो बीटा थैलेसेमिया जते बेले हमर बीटा चेन रो सिंथेसिस ता कमी जाउछ ठीक अछि तो एडा हे गेला हमर एडा हला बीटा ग्लोबिन चेन बीटा थैलेसेमिया में हला बीटा ग्लोबिन चेन रो सिंथेसिस जते बेले कमी जिबो बीटा थैलेसेमिया ठीक नेक्स्ट 83 the defective protein in the cystic fibrosis normally functions as sodium potassium pump chloride ion channel calcium transporter glucose transporter yes question number 83 defective protein in the cystic fibrosis is also an autosomal recessive disorder जोटा कि हमर गोटे पर्टिकुलर जीन CFTR जीन रो म्यूटेशन रे एटा होची जोटा को भी कहआ जाउते कोन सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर है ना रेगुलेटर ठीक अछि तो हमर एडा हला कोन क्लोराइड आयन चैनल को से हमर रेगुलेट करतेरा जा द्वारा कि बॉडी रे म्यूकस सिक्रेशन ता हमर रेगुलेट होची एंड थिक एंड स्टिकी म्यूकस तार जते डिसर्कुलेशन ही जाउची लंग्स रे थिक एंड स्टिकी म्यूकस फॉर्मेशन ही जिबा जो लंग चोकटा हमर देखा जाउची एज अ रिजल्ट नेक्स्ट 84 द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन इन द डाउन सिंड्रोम इज 45XO 46XX 47XXY 47 प्लस 21 माने 21st क्रोमोसोम रे आ गोटे एडिशन ही जाउची डाउन सिंड्रोम सी हैं अरे डाउन सिंड्रोम पचारुची ए हैं आशुतोष डी ओवर अरे डाउन सिंड्रोम ता कोन होची डाउन सिंड्रोम हैला ट्राइसोमी इन द 21st क्रोमोसोम trisomy in the 21st chromosome जा द्वारा कि short in stature cleft palate bilobed tongue partially open mouth है ना एवढा सब हमारा एज अ फीचर देखा जाए 85 a person with Klinefelter syndrome usually possesses which chromosomal complement 45XO 46XY 47XXY 47XYY Klinefelter syndrome Klinefelter syndrome
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रे नॉर्मल हमर ऑटोसोम्स ठीक थिबो आ XY जगह रे डबल XY रहिबो हैला जा द्वारा की कोन होची हमर मेल रा स्टेराइल हो जाउची बिकॉज ऑफ स्मॉलर टेस्टिकल साइज आ गायनेकोमास्टिया कंडीशन मध्ये हमर एक केस रे देखा जाय गायनेकोमास्टिया कंडीशन रा माने कोन होता enlargement of the breasts in the male हैला enlargement of the breasts in the male next 80 एटा केते हला 47 डबल XY हैला नॉर्मल 44 क्रोमोसोम अछि तबरे 1 2 3 47 हे जाउची ना टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम becomes 47 next which chromosomal complement is characteristic of the Turner syndrome 8 sterile हे जबो मेल देखो टर्नर सिंड्रोम रे मते से होची क्लाइनफेल्टर रे गोटे एक्स क्रोमोसोम कटि जाउतला एडी गोटे एक्स क्रोमोसोम सॉरी क्लाइनफेल्टर रे गोटे एक्स क्रोमोसोम रे एडिशन हे जाउतला एडी हमर गोटे एक्स क्रोमोसोम ते कमी जाउची हैला तो 44 हमर ऑटोसोम सेम रहिबे एक्स एक्स जगह रे ए जगह रे किछि रहिबे तो XO हे जाउची हैला XO हे जाउची त माने 44 प्लस 1 becomes 45 हैला अब एडा जनरली हमर फीमेल मानको केस रे देखा जाउची आ एठी मध्ये फीमेल्स माने हमर स्टेराइल हे जाउची हैला स्टेराइल हे जाउचंदी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर देखा जाउची आ प्रेगनेंसी रे चांस मध्ये हमर पूरा पूरी नियर बाय नील रोज नेक्स्ट the mutation responsible for the sickle cell anemia is classified as frame shift mutation nonsense mutation missense mutation silent mutation कौन कह जाउची म्यूटेशन जोड़ा कि हमर सिकल सेल एनीमिया रे देखा जाउची को प्रकार म्यूटेशन सेटा को प्रकार म्यूटेशन यस इट इज मिससेंस म्यूटेशन हला गोटे प्रकार पॉइंट म्यूटेशन बा मिससेंस म्यूटेशन बोली एडा को कहै जाउची 87 सी हबरे सी हब ए हबनी अरे फ्रेम शिफ्ट रे हमर गोटे पूरा गोटे सेटेड शिफ्ट हे जाउची गोटे सेट ऑफ हमर जीन्स शिफ्ट हबो ठीक अछि मिससेंस म्यूटेशन हबला नेक्स्ट 88 which statement best distinguishes the sickle cell trait from the sickle cell anemia कहलो एडा करलो जल्दी मिससेंस रो गोटे टाइप टा हे पॉइंट म्यूटेशन सेथरु ही सेडा रे ही जिवो हमर पॉइंट म्यूटेशन हला 88 टा कोन हबो हमर जेतु सिकल सेल एनीमिया गो हमें गोटे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोली कहूचे तो इंडिविजुअल जो ट्रेटर हेटेरोजाइगस थांती से माने यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक थांती कांगे एसिम्प्टोमेटिक थांती कांगे ना एडा होचे गोटे हमर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ता सेति पई बोली हमर ट्रेट ता को प्रकार ट्रेट ता सिकल सेल एडा होचे हमर रिसेसिव ट्रेट ता तो रिसेसिव ट्रेट ता जदी हमर जते बेले दीटा जक जीन रिप्रेजेंट हेबो सेते बेले ही जागी एक्सप्रेशन हबो न होले हमर हेटेरोजाइगस कंडीशन ने एसिम्प्टोमेटिक होय छै नेक्स्ट the inheritance pattern of both sickle cell anemia and beta thalassemia is autosomal dominant X-linked recessive autosomal recessive mitochondrial हमरो सिकल सेल एनीमिया हला थैलेसेमिया हला सिस्टिक फिब्रोसिस हला फिनाइलकीटोनुरिया हला सब गुडा होचनी हमर ऑटोसोमल रिसेसिव आ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कथा जदी कहबा ताला हम दीटा कथा पढछे तो कलर ब्लाइंडनेस आ गोटे होजे कोन हीमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफिलिया नेक्स्ट Patients with beta thalassemia major often require repeated blood transfusions, primarily because of reduced platelet production, severe deficiency of the functional hemoglobin, increased plasma volume only, excessive leukocyte destruction. Excessive leukocyte destruction. बीटा थैलेसेमिया हो कि हमरा सिकल सेल एनीमिया रे मध्ये हमरा रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दरकार पड़ुची अच्छा हमें थैलेसेमिया को जदी कहबा अल्फा चेन रो सिंथेसिस टा कमिले अल्फा थैलेसेमिया यदि अल्फा चेन रो सिंथेसिस टा कमुची ताले से हीमोग्लोबिन ना हमरा फुल्ली फॉर्म हेगी हमरा इफेक्टिव हे पारु हैला फुल्ली फॉर्म हेगी हमरा इफेक्टिव हे पारु तो से केस रे हमें कहूचे कि जे तो थैलेसेमिया से जो हीमोग्लोबिन टा फॉर्मेशन हैला सेटा हमरा इफेक्टिव नाही ऑक्सीजन प्रॉपर्ली कैरी करि पारबनी तो से काहे का हमरा हैला कहला
से क्वाडू हैला हमर एज अ प्रॉपर हीमोग्लोबिन तो से केस रे एनीमिया देखा जाउची हैला एनीमिया देखा गले हमर कोन होची एनीमिया देखा गले हमर बॉडी रे ब्लड रिक्वायरमेंट रहउची तो एक्सटर्नली हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करूची हैला बी सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ द फंक्शनल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रे मोर अल्फा चेन रे मोर प्रॉपर्ली फंक्शन हेनी ता माने कोन से हीमोग्लोबिन टा फंक्शनल हबो कि आउ हेई परिबनी ना तो हीमोग्लोबिन थाई कि मते से नथिला भलिया फंक्शनल तो नहीं ना से ऑक्सीजन तो कैरी करूनी ना ठीक अछि तो एरा हि जो हमरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 the gene mutated in the cystic fibrosis is located on the chromosome 7 chromosome 21 x chromosome chromosome 13 cystic fibrosis ପାଇଁ ବୋଲି gene ଟା cystic fibrosis ରେ ଆମର कोन होची alpha and beta cystic fibrosis रे हमर कोन होची cystic fibrosis रे CFTR gene रे mutation हे जाउची आ से जो CFTR gene टा अछि सेटा कोडी अछि CFTR gene टा अछि जो हमर सेटा कोडी अछि chromosome number 7 तो एडी हमर chromosome number 7 रे जते बेले CFTR gene रे mutation ही जाउची for any reason then we find cystic fibrosis amora hoax a characteristic clinical feature of the cystic fibrosis is thick sticky mucus affecting the respiratory and digestive system progressive degeneration of the motor neurons abnormally high red blood cell count loss of melanocytes कौन हम cystic fibrosis रे clinical feature टा characteristic clinical feature टा कौन cystic fibrosis रे जेते mucus रे production टा हमें control करि पारनी बा regulated way रे ताक perform करि पारुनी सेहिति पई बोली कौन होची ना हमर cystic fibrosis हेले lungs माने not only lungs actually हमर digestive system excretory system हमर respiratory system सब affect होची primarily lungs affect हो जाउची काहे ना सेहिति हमर mucus रे over production हे गेले हमर respiration रे problem होची breathing रे problem होची oxygen exchange रे problem होची है ना तो सेटा को हमर CFTR जते बेले हमर हे जाउची CFTR जीन रे म्यूटेशन हे जाउची ताले मेजरली इफेक्ट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम रे देखौची ड्यू टू व्हिच थिक स्टिकी म्यूकस सब हमर प्रोडक्शन होची एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच बॉडी रे हमर गैसेस एक्सचेंज टा रेस्ट्रिक्ट हो है ना नेक्स्ट व्हिच meiotic error is primarily responsible for the down syndrome crossing over non disjunction of the chromosome number 21 gene duplication deletion mutation 93 very simple हैला कर दियो डाउन सिंड्रोम रे कोन एमिदि हमरा होची किछ गोटे मियोटिक एरर टे होची जा पे बोले नॉन डिस्जंक्शन हे गे आ गोटे हम क्रोमोसोम रे एडिशन हे जाउची हैला आ गोटे क्रोमोसोम रे एडिशन हे जाउची तो सेई जगह रे कोन होए इट इज नॉन डिस्जंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 वेरी गुड 94 which feature is commonly associated with the down syndrome hyperactivity of the thyroid gland only flat facial profile with intellectual disability absence of the fingerprints increased muscle mass down syndrome जोड़ा कि हमरो trisomy in the 21st chromosome रे देखा जाउची एडी हमरो cleft palate short and stature body है ना मून फेस आ चारि पटे हमरो मसल मास हमरो ये एग्री थिबो ता संगे फ्लैट फेस थिबो फिजिकल फिजियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमरो पूरा पूरी हमें हरै बसिथिबा ए केस रे डाउन सिंड्रोम हमरो एडा ए टाइप ऑफ सिम्पटम्स जे देखौ which hormone is generally found at elevated level in the male with Klinefelter syndrome due to testicular failure Klinefelter syndrome जोडा कि हमरो 44 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स रहि गिरी डबल XY रोची तो जेतु एटी गोटे एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हे जाई ताउची extra X chromosome add हे जाई ताउची से extra X chromosome दा कोन it is the bar body हैला bar body तो bar body रो प्रेजेंस जते बेले मेल केस रे होची सते बेले टेस्टिकल्स रो साइज कमी जाउची कमुची ना नहीं as a result of which FSH रो हार्मोन रो सेक्रेशन बढ़ी गले सेमानगर टेस्टोस्टेरोन रो लेवल टा कमी जाउची as a result of which सेमानको गायनेकोमास्टिया कंडीशन देखा जाउची स्टेरिलिटी कंडीशन देखा जाउची स्मॉलर टेस्टिकुलर साइज देखा जाउची आ जहा द्वारा कि सेमाने फर्टिलिटी सेमाने हरि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 a female with Turner syndrome commonly presents with tall stature and enlarged testes webbed neck and streak ovaries excess facial hair and polyploidy gigantism and hyperthyroidism Turner syndrome जोडा रे कि हमर नॉर्मल कंडीशन रे 44 टा प्लस डबल एक्स एते हमर फीमेल ही थांता किंतु ए डबल एक्स जगह रे हमर गोटे एक्स रे नाही 44 प्लस एक्स ता माने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 45 इन दैट इंडिविजुअल
तो ए जगह रे जनरली हमर फीमेल्स माने ही अफेक्ट होचंदी ना गोटे एक्स क्रोमोसोम अछि माने से खाली फीमेल्स माने ही अफेक्ट होचंदी बट हियर द फीमेल्स आर आल्सो स्टेराइल females are not able to give birth to the babies हैला तो से जगह रे फीमेल मानकर कॉमनली हमर प्रेजेंटेशन कोन माने वेब्ड नेक एंड प्लस स्ट्रिक ओवरीज ओवरीज उडा हमर प्रॉपर्ली फॉर्म हे कि ओवम रो सिक्रेशन करि पारुनी हैला ओवम रो सिक्रेशन करि पारुनी एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच ए जिंस हमर देखा 97 which disorder is correctly matched with its chromosomal abnormality down syndrome trisomy 21 turner syndrome trisomy x Klinefelter syndrome monosomy x cystic fibrosis trisomy 13 कौन हबो correctly match down syndrome trisomy 21 yes एटा करेक्ट हबो down turner syndrome trisomy x नहीं turner syndrome होची 44 plus xo Klinefelter syndrome होबा कोन एटा हबो 44 plus double xy और cystic fibrosis कोन mutation in on chromosome number 7 on the CFTR G. Next, 98. Polymerization of the abnormal hemoglobin in the sickle cell anemia occurs predominantly under high oxygen tension, low oxygen tension, high blood glucose concentration, high calcium concentration. Correctly match. Yes. Polymerization of the abnormal hemoglobin देखो सिकल सेल एनीमिया रे हमर जो abnormal hemoglobin फॉर्म होची abnormal hemoglobin फॉर्म हेबार कारण कोन मेजर कारण एया ही गला जे हमर ऑक्सीजन टेंशन लो रहूची हैला ऑक्सीजन टेंशन लो रहूची से लो ऑक्सीजन लेवल पई बोली ही हमर कोन होची सेटा बार-बार abnormal hemoglobin को ही polymerization हमको देखा जाची हैला तो इट इज आंसर विल बी लो ऑक्सीजन टेंशन हैला लो ऑक्सीजन टेंशन क्वेश्चन नंबर 99 Which laboratory technique is most suitable for the prenatal detection of the chromosomal abnormalities such as Down syndrome? Karyotyping of the fetal cells, southern blotting, SDS page, gram staining. हाँ वो टेक्निक रे हमें प्रीनेटल क्रोमोसोमल abnormalities हमें एवडा को सब देखि परिबा देखो जोडा को कि हमें कोन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर रे amniocentesis बोली पढ़ नथिले amniocentesis रे हमें क्रोमोसोम रो स्टडी करि परिबा हैला क्रोमोसोम रो स्टडी करि परिबा अच्छा क्रोमोसोम रो स्टडी जो करि पड़छे क्रोमोसोम रो जो अरेंजमेंट ता रोचे क्रोमोसोम नंबर पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 करि गिरी हैला तो सेटा हमरो karyotyping बोली कहै जाउछ fetal cells रो karyotyping माने होचे कोन karyotype माने कोन karyotype रो माने हैला अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स arrangement of the chromosome chromosome को तमरो खोली की अरेंज करि देला पर तापरे हम जानि परिबा को जगह रे जे हमरो ट्राइसोमी हे कि सेति पई बोली ए सिम्पटम देखा जाउची karyotyping बोली कहै छै पिला माने एडा को हला karyotype बोली कहै छै karyotype माने हला arrangement of the chromosome so everyone last question for the day which of the following pair include only disorder caused primarily by the gene mutation rather than the chromosomal abnormalities gene mutation द्वारा प्रायतः होची rather than the chromosomal abnormalities DNA syndrome and Turner syndrome, Klinefelter syndrome and Down syndrome, sickle cell anemia and cystic fibrosis, Turner syndrome and beta thalassemia. Which of the following pair includes only disorders caused primarily by gene mutations rather than the chromosomal abnormalities? Rather than the chromosomal abnormalities. वो gene mutation द्वारा होचे chromosome रे किछि change. See, Itishri. See, yes. सिकल सेल एनीमिया एडी हमरो बीटा जीन रे हमरो जते बेले म्यूटेशन हे जाउ सिस्टिक फिब्रोसिस होची हमरो सीएफटीआर जीन रे जते म्यूटेशन हे जाउची से केस रे हमरो एडा देखा जाउची बीटा थैलेसेमिया मध्ये हमरो जीन म्यूटेशन किंतु टर्नर सिंड्रोम होची हमरो कोन क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम मध्ये क्रोमोसोमल ऑटोसोमल एडा हमरो सेक्स क्रोमोसोमल एडा मध्ये हम सेक्स क्रोमोसोमल एडा हमरो ऑटोसोमल ठीक अछि हैला हां ब्लू और व्हाइट कहि दबा और रो कहि दबा देखो 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 हमर गोटे प्लाज्मेट रहउची हमर गोटे प्लाज्मेट रहउची जोडा को कि हमर PUC88 बोली कहूचे सेठी हमर गोटे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन अछि आ गोटे हमर LAC-Z जीन रो रीजन दे अछि ठीक अछि LAC-Z जीन रो रीजन दे
अच्छी ए लैक्सेट जीन रीजन रे हमर देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स माने BAM H1 साइट भी अच्छी आउ SAL1 साइट भी अच्छी PVU1 साइट भी अच्छी PVU2 साइट भी अच्छी बहुत गुडा क्लोनिंग साइट प्रेजेंट अछि तो फॉर एग्जांपल जदी मु एटारो हला जदी मु एटारे किछि गोटे मु मोर कोन करली नॉर्मल कंडीशन एरा नॉर्मल ठीक अछि नॉर्मली कोन कहूची लैक्सेट जीन दा एक्टिव अछि लैक्सेट जीन दा एक्टिव थिले से हमर बीटा गैलाक्टोसिडेज गोटे एंजाइम दे रिलीज होची जोटा कि जते बेले मु ता ऊपर एक्स गाल एडा कोन लागी एडा होची गोटे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट ता कि बाइंड करला परे कलरेशन देखे हैला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ता से बाइंड करला परे हमर एटी ब्लू कलरेशन देखौची ब्लू कलर रो कॉलोनी फॉर्म हैला ताले ब्लू कलर रो कॉलोनी फॉर्म हैला अच्छा फॉर एग्जांपल मु कोन करली माने करो साल1 साइट रे मोर गोटे माने जीन ऑफ इंटरेस्ट आनी के पुरेगी ए जगह रे मोर कोन करली ना तार इंसर्शन कर देली इंसर्शन कर देबो जो कोन हैला कहलो एडा को ओपन करली गोटे फॉरेन जीन रे भीतर परेली तो मोर ए जीन दा नष्ट हो गेला ना नहीं लैक्सेट जीन ता मोर डिस्टर्ब हैला ना नहीं हैला डिस्टर्ब हैला परे एबे आउ सी एक्टिवली बीटा गैलाक्टोसिडेज प्रोड्यूस करि परिबो कि आउ सी बीटा गैलाक्टोसिडेज प्रोड्यूस भी करि परिबोनी बीटा गैलाक्टोसिडेज प्रोड्यूस न करि परिबा जो एक गाल संगे मिसी परिबोनी न मिसी पाले से ब्लू कलर रो कॉलोनीज दाउ दबोनी तो को कॉलोनीज दबो व्हाइट कलर रो कॉलोनीज दबो हैला व्हाइट कलर रो कॉलोनीज दबो तो व्हाइट कॉलोनीज देला देबार अर्थ होची कि मोर एडी म्यूटेशन हे जाइछ मोर एडी इंसर्शन हे जाइछ हैला एडी मोर इंसर्शन हे जाइछ तो एडी इंसर्शन हे गेला माने व्हाइट कॉलोनीज फॉर्म हैला इंसर्शन हे नी जदी ब्लू कॉलोनी फॉर्म हैला तो रिकॉम्बिनेशन हे ची जदी व्हाइट कॉलोनी फॉर्म हैला रिकॉम्बिनेशन हे नी जदी ब्लू कॉलोनी फॉर्म ठीक अछि हैला क्लियर so with this thank you so much everyone I hope आज रो सेशन तमानो पे बोली हेल्पफुल हेतिबो हैला पुनी देखा हबो आ गुटे सेशन रे आउ थरे पुनी देखा हबा हमें ठीक अछि तो thank you so much everyone हैला yes हां ओके तो सेशन को लाइक कर दबो हैला आउ कमेंट करबो केमिति लागिला आज रो सेशन पुनी देखा हबो आ गुटे सेशन रे विथ दिस तमे पाठ पढ़ा पढ़ी चलै थाओ हैला पाठ पढ़ा पढ़ी चलै थाओ भलो से एग्जाम करिवो भलो से प्रिपरेशन करिवो पुनी हमें रिवीजन करिवो पुनी देखा थैंक यू सो मच एवरीवन जय जगन्नाथ।